आज देखिए पैलेंटोलॉजी जी इनवर्टिब्रेट्स बेसिकली आम इनवर्टिब्रेट्स रिविजन करवा वर्टिब्रेट्स तुम गोटे दुटा क्वेश्चन पड़छ जोड़ा रिलेटेड टू स्ट्राटिग्राफी जो थे कि तुम शिवालिक बा डायनासोर्स जो फोसिल जहाँ मिले तार ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पड़े बाकी तुम मॉर्फोलॉजिकल फीचर रो क्वेश्चन पड़े सो हमें इनवर्टिब्रेट स्टार्ट करिया स्टार्ट फ्रॉम ब्राचियोपोडा सो ब्राचियोपोडा इज ए फाइलम ब्राचियोपोडा फाइलम सो ब्राचियोपोडा मीन्स होची कम ब्रांचिंग फुट और यू कैन से आर्म लाइक फुट then आज कौन ब्राचियोस मीन्स आर्म पोडोस मीन्स फुट तो तार ब्राचियोपोडा ब्राचियोपोडा एक्सक्लूसिवली मराइन बॉटम ड्वेलर तो ओनली मराइन कंडीशन मिलते एंड बॉटम ऑफ द ओशन रे फ्री फॉर्म रे पाई परबो अटैच फॉर्म रे पाई परबो डिफरेंट टाइप रो तुम्हें देखियो हैबिटेट रे अब हमें बोट सेल कौन बोट सेल और लैंप सेल बोली कहा जाए कहना तुम ब्राचियोपोडा and sometimes sticks to the stratum like this so it look like a boat ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ boat cell କଣ अब देखिए तारा डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस जो ब्राचियोपोडा इज बाइवाल्व एनिमल देखो कौन बाइवाल्व एनिमल जोटा कि इट हैज टू वाल्व्स वन वाल्व मोर larger thigh, another valve smaller thigh. The larger valve is called ventral valve. A smaller valve is called as pedicle valve. So the pedicle valve, इटा कौन कहती? Ventral valve, dorsal valve कौन कहती? Brachial valve कौन? Then dita valve जो line में join हो चुनती, that is called as your hinge line. That too towards the posterior side. तो आर गोटे posterior side ऐसे बेटा posterior. डाला anterior so posterior तुम्हें केमिति मार्क करिवो बाय द प्रेजेंस ऑफ अम्बो कोन ताको अम्बो सो अम्बो होजी ई पाटा पहला तुम कहि परिवो अम्बो जोटा कि दैट मार्क्स द posterior part and it's also the posterior extremity जो एटा तुम्हारा posterior हवा एटा ला anterior and जोटा larger part हला so this is larger part it is ventral this is dorsal so ventral dorsal तुम्हें केंद्र डिसाइड करियो बाय साइज ऑफ द वाल्व तो लार्जर वाल्व इज कॉल्ड वेंट्रल वाल्व द स्मॉलर वाल्व इज कॉल्ड डोर्सल वाल्व एंड द टू वाल्व जॉइंस टुगेदर along the hinge line towards the posterior side you see this line the two valves join with each other it is like this okay more gote larger valve one smaller valve they join on this line this is called as your hinge line and this called is your umbo. This is the lateral view and dorsal view. So the two valves are unequal in size. Dita valve कौन थे? Unequal in size रहिबे. ସେଥିପାଇଁ हम कौन कहते? These are inequal so these are inequal and equilateral that means the valves are of different size but each valve can be separated into two equal valve like this so this is called equilateral so each valve are inequal तुम्हारा ब्राचियोपोडा सेल हम टोटल कहबा पर ब्राचियोपोडा सेल are inequal and equilateral then the valves are joined at the anterior side because this is the anterior side this is the posterior side the valves are joined along the anterior side along a line that is called as line of commissure line of
line of commissure. So these are general morphology. Because tomorrow dita valve रहिबो, one larger valve, one smaller valve. Larger valve is called as a ventral valve or pedicle valve. Smaller called as a brachial valve or dorsal valve. The two valves are in the posterior side along hinge lines, and the posterior extreme end is called as your umbo, and the anterior they are joined by line of commissure. Next है तुम्हारा dentition. Brachiopoda valves. Brachiopoda cell can have teeth or doesn't have teeth. So according to that, the two types. One is your articulata, another inarticulata. So articulata, those are teeth are present. If three teeth are present, they are present in the along the hinge lines. And if teeth are not present, that is called inarticulata. So articulata teeth present, inarticulata teeth absent. So example man rakho articulata example hochi orthis. Then inarticulata example hochi lingula. Now cunera. Then lingula, it is a living fossil. Remember, not a living fossil. Living fossil means they are not changed for a longer period of time. जेबुट तुम appear करथवे for longer period of time बा present age पर्यंत तंगर कोनोसी changes आसी नथो सेता ताको कोन कजाय living fossil को living माने भाबियन जे कि एबे पन्द बंचिस बोली तने सेबेटु एबे पन्द living माने होची तारा कोनोसी changes आसीन ठीक है तुम लाइफ रे तुम सब living fossil किछि चेंज आसुनी ना पाठ पढछो ना कोन करछो सेबा तमे भी गोटे लिविंग फॉसिल एग्जांपल धीरे धीरे आबाक जाउछ बुढा लाडू भी सेबा परिस्थिति किछि चेंज हेनी माने किछि चेंज हेनी तुम खुशी हिजो हम यंग रवि सेबला किछि चेंज नो कैरेक्टरिस्टिक किछि चेंज होबो दिस कम्स टू ब्राचियल स्केलेटन सो ब्राचियल skeletons these are can say calcareous matter that present in the brachial valve so brachial valve रे जो calcareous matter था that supports the soft part of the brachiopoda that is called as lopophore जिते भी all मोर सब पार्ट अछन ब्राचियोपोडा दे ऑल टुगेदर कॉल्ड एज लोपोफोर त कोन कहली लोपोफोर बोली कह जाय तो लोपोफोर इज सपोर्टेड बाय calcareous framework that is called as your brachial skeleton it is present in the brachial valve बा जेहेतु जो valve रे तमर brachial skeleton अछि ताको brachial valve बोली कह जाय which is a smaller valve so brachial skeleton different type रो थांते मे बी से माने दीटा two small curved plate triangular plate वाला थांते that is called as crura और दे माने loop शेप रो थाई परिबे ता कोनती कोन माने सेमति किछि कोआ जाय नेम सो लूप लाइक थाई परंती नले स्पाइरली कॉल्ड हे परंती जो कैल्केरस मेटल दे मे प्रेजेंट लाइक दिस की दीटा स्मॉल कर्व प्लेट वाला थाई परंती नले सेमति लूप लाइक रो थाई परंती नले सॉरी लूप लाइक रेटन लाइक लूप लाइक रे एमति थाई परंती नले स्पाइरली कॉल्ड हे परंती हला तो एटा को हमें कोनती कोन स्मॉल कॉर्पेट को क्रूरा कहते तार एग्जांपल होच तुम्हारा रिंकोन हला देन लूप लाइक लूप शेप रहले एग्जांपल टेरेब्राचुला स्पाइरली कॉर्ड हले एग्जांपल होच स्पिरिफोर एंड प्रोडक्टस सो दीज आर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राचियल स्केलेटन फॉर मसल इंप्रेशन सो मसल इंप्रेशन अकॉर्डिंग टू द मोर valve of the brachiopod the valve of the brachiopod that can be opened and closed by means of some muscle so after the death of the organism it is remain as impression that is called as muscle impression there are two types of muscle impression one is your adductor muscle impression and another is your deductor muscle impression what कहते हैं adductor muscle impression another is your deductor muscle impression ठीक है so adductor muscle impression deductor muscle impression they helps to open and close the valve so adductor impression it helps to close the valve and deductor muscle impression it helps to open the valve and the extent of opening and closing they are conducted by another muscle that is called your adductor muscle it helps to control the extent of opening kete open hoba kete close hoba taku ke kate adductor muscle so adductor muscle impression tomorrow it helps to close the valve deductor muscle impression it helps to open the valve and adductor it helps to adjust the extent of opening then comes to tomorrow
pedicle opening. So the pedicle कौन? These are triangular open space that present in the pedicle valve. होता है pedicle valve रे present है. So the pedicle opening that are present on pedicle valve. तो जो pedicle जो opening है in ancient Brachiopod they are completely confined to the pedicle valve or ventral valve that called as your foramen. Foramen केतले कुआजिबो? When the pedicle opening completely confined to the ventral valve. Sometimes it is shared by both valves. Shared by both valve. करेक्ट. तो जो pedicle opening अच्छी इधर मे भी तुम्हारा फोरामेन है परे और शेयर्ड बाय बोथ वाल्व. फोरामेन माने ओनली ऑन वेंट्रल वाल्व. ठीक है. शेयर्ड बाय बोथ वाल्व वाले दीटा वाल्व आछो. तो ओपनिंग ऑन द वेंट्रल वाल्व इज कॉल्ड एज योर deltherium and opening on the dorsal valve is called as your nototherium. So la ventral valve pai and la dorsal valve pai. So it is a triangular opening like this from which तुम्हारा pedicles are commence. जो जगह तुम्हारा pedicle बाहर है triangular opening था. So जितने बड़ा ओपनिंग था पेडिकल ताठो स्मॉलर था. पेडिकल डज नॉट कंप्लीटली कवर द पेडिकल ओपनिंग. तो सितपे का होवे दे सीक्रेट मटेरियल फ्रॉम द वॉल ऑफ द पेडिकल टू कवर द तुम्हारा एम्प्टी स्पेस. सो दीज आर कॉल्ड एज योर प्लेट्स दैट कवर द पेडिकल ओपनिंग. सो इन deltherium the plates are called as deltidium. That means deltidium that covers the pedicle opening, and in nototherium it is called as chilidium. So it is called the deltidium. Deltidium, the plate that covers the pedicle opening, or deltherium, nototherium, it is called as chilidium. But the chilidium covers the plate, covers the opening in the nototherium. So these are tomorrow parts of the pedicle opening. नेक्स्ट हमारा इसमें तुम्हारा इकोलॉजी अनुसार देखे रे. So Brachiopoda may found in free form, free swimming form. You find attached by valve, attached by spines, attached by pedicle. So free swimming है तुम्हारा productus तो देखिए completely doesn't attach with anything. It is called free swimming. Then attached by valve है crania. Attached by valve है तुम्हारा crania. तो ये वाला तुम्हारा productus example. Productus ये वाला तुम्हारा crania. Then attached by spine होची strophallosia. Then attached by pedicle uchi terebracula. Cell dimension तो 3 type of parameter तुम्हें define करो. गोटे होची length, width, और गोटे thickness. So कौन Brachiopoda cell रो length हमें केमती decide करंती from the anterior end to the posterior end. So this is posterior and anterior end. So this is your length, and perpendicular to the length along the hinge line is your width.
Then thickness, it is center of the one valve to center of the other valve. So width length है तुम्हारा posterior और anterior, width है perpendicular to the length along the hinge line, and thickness तुमको center of one valve to center of other valve. So that is called your thickness. ता अनुसार तुम्हारा भी सेल को डिवीजन कराई छी. ऐसे का hinge line रो morphology अनुसार दीना टाइप रो करा जाए. गोटे होची स्ट्रोफिक और गोटे होची आस्ट्रोफिक. तो स्ट्रोफिक होची जदि ब्राचियोपोड have straight hinge line, like in case of spiriform तुम्हें पाइबो, मेगाथाइरिस पाइबो, and in astrophic होची where the hinge line is curved, right तुम्हें पाइबो कोठी in case of Terebrachiopoda. So तुम्हारा dimension जो होची width और length अनुसार भी तुम्हारा division कराई छी. There are three types of brachiopod cell forms. One called the spiriforid, और कौन थी मेगाथाइरिस, और कौन था टेरेब्राचुलेट. तो स्पिरिफोइड रे कौन था, लेंथ विल बी मोर देन द सॉरी विड्थ विल बी मोर देन द विड्थ. मेगाथाइरिस रे you can say length is slightly greater than the width. Both cases the hinge line are straight. In case of Terebrachiopoda, the hinge line are curved and length will be greater than the width. Length will be curved and the length will be greater than the curve. Example are spirifor and megathyroid and Terebrachiopoda. वो name अनुसार तुम्हें मन रखना. Then I show growth of Brachiopod. Growth there are three types of growth. So Brachiopod produce first are embryo produce. The embryonic stage of Brachiopod is called as protegulum. What is protegulum? So embryo रो तुम्हारा growth होगा start होगा. Suppose embryo है ना, then material will added on all side of the embryo to produce a Brachiopod. So जो embryo material add हुए तारे अनुसार we have three types of growth. One is your holoperipheral, another is hemiperipheral, another is mixoperipheral. In holoperipheral growth, material will add equally on all sides. There is a concentric structure होगा. So cell matter added equally in all sides. जो थ्री की तुम्हारा गोटे कौन होगा सिमेट्रिकल फॉर्म बस concentric form गोटे प्रोड्यूस होगा यहाँ. तो कौन देखो holoperipheral growth. Hemiperipheral growth रे cell matter added more on the anterior side than the posterior side. So it transverse section, transverse बड़ा cell form produce होगा. तो anterior margin टा extended outward. तो anterior margin अच्छी सेटा अधिक grow करिवो. ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର mixoperipheral growth. So mixoperipheral growth ରେ ତୁମର more material add ହବ. Material सब direction equal add हବ, but more add हବ on the posterior side. But add हବ more add हब on the posterior side. So posterior side रे more add हेले तो सब उधर एटा posterior side हला. It more add हेले it will grow and bend towards itself to produce a self-like extension called as your palindrome. कौन कहता हूँ palindrome. So there are three types of growth. Hollow रे equal addition हब, hemi रे more anterior side addition हब, mixture रे सब equal हब but more in the posterior side. More in the posterior side. Next comes to Brachiopoda cell form गुरा. So तो ये भी पढ़ूँ चुका देखिए. Cell form केंद्र मान रखियो. तो इन cell form तुम्हारा first thing होची तुम्हारा cell रा shape अनुसार तुम्हें मान रखो. करें cell रा shape अनुसार. So according to the cell shape will define the cell form of the Brachiopod. So we use like this biconvex, ventriconvex, dorsiconvex, concave, convex, so use करा जाए. So biconvex means both of valves are convex. But जब देखिए ventriconvex means the ventriconvex आसिवा, that means the ventral valve is more convex than the dorsal valve. यदि dorsiconvex आसिवा, dorsal valve is more convex than the ventral valve. Then comes to this
कनकेव और कन्वेक्स तो फर्स्ट अच्छी कनकेव तापर कन्वेक्स तो फर्स्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर ब्राचियल वाल्व कमे कंसीडर करो ब्राचियल वाल्व सो कनकेव कन्वेक्स मींस ब्राचियल वाल्व इज कनकेव वेंट्रल वाल्व इज कन्वेक्स तो से अनुसार कन्वेक्स और कनकेव हेले ब्राचियल वाल्व इज कन्वेक्स डोर्सल वाल्व इज वेंट्रल वाल्व इज कनकेव है ना ब्राचियल वाल्व इज कन्वेक्स वेंट्रल वाल्व इज कनकेव सिम्पली यू कैन आल्सो डिफाइन प्लानो कन्वेक्स वे परियो प्लानो कन्वेक्स मीन the dorsal valve is planar and ventral valve is convex कि convex of plane जदि कहबा तुम उल्टा आइबो कि the dorsal valve is convex the ventral valve is planar right and in some form a single valve can be both concave and convex single valve टा कोन both concave हे परयो convex हे परयो से केस ता को आ कोन reciprocate कोन reciprocate यदि तुम्हारा हिज लाइन आड़े से कन्वेक्स हेइतिबो डाउनवर्ड एंटीरियर आड़े से कनकेव लाइक दैट हैले सो कन्वेक्स एट अम्बो कनकेव एट ऑन द राइट हैले बा तुम्हारा कनकेव एट अम्बो कन्वेक्स एट ऑन द राइट तो चेंज हे परिबो सेल फॉर्म रे गोटे सेल फॉर्म रे डिफरेंट शेप में पाइबो दिस कम्स टू तुम्हारा सेल वॉल स्ट्रक्चर सो सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ ब्राचियोपोड so it is different in both articulata and inarticulata as in case of tomorrow articulata there are three layers ଗୋଟେ periostracum primary and secondary layer कोन छै periostracum layer जोटा कि सबटा outer layer middle layer होची primary layer and inner layer होची tomorrow secondary layer तो जोटा periostracum layer अछि there are non calcareous organic layer आसीबो primary layer आसीबो कोन calcareous and secondary also calcareous so तीनटा टाइप रो लेयर आसी कोथरे आर्टिकुलेटर रे इनआर्टिकुलेटर देयर टू लेयर्स इनआर्टिकुलेटर कान आसी खाली दीटा लेयर आसी गोटे पेरियोस्ट्रकम आ गोटे प्राइमरी गोटे जो कोन पेरियोस्ट्रकम आ गोटे प्राइमरी ता छडा तुमरो अनदर इंपोर्टेंट फीचर जोटा देखा जाय इन केस ऑफ ब्राचियोपोड ता कोन दे पंक्टेट कोन दे पंक्टेट तो अकॉर्डिंग टू तो सेल ऑफ द ब्राचियोपोड जोटे ब्राचियोपोड सेल अछि ब्राचियोपोड सेल रे गोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट है फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर ऑफ द सेल त कोन कोन पंक्टेट अंडर द माइक्रोस्कोप दैट कोन सेल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकुलेट ब्राचियोपोड शो थ्री मेन टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइन्यूट कैनल्स जो माइन्यूट कैनल प्रेजेंट है in case of तुम्हारा articulata brachiopoda cell रे minute canals of present है according to that the cell is called as punctate or impunctate जदि तुम्हारा minute canal present है ताले से cell को हम कौन कहते punctate cell जदि सेटा absent है ताले ता कहते impunctate cell so impunctate structure होची cell is solid and compact no canals present और जदि cell contains minute vertical canals ता कहते endopunctate और जदि that appear like punctate like structure ताल तक कौन दी pseudopunctate गोटे डायग्राम में देखिए हमें ये जो सब कैनल प्रेजेंट अछि एटा गोटे बुझो यदि एबला कैनल माइन्यूट कैनल प्रेजेंट थाए ताले इट इज कॉल्ड एज योर punctate एटा जदि तुमरा कोनोस भी कैनल प्रेजेंट न थाए ताले ता कौन दी impunctate and it calcareous ring like structure था which appear like a canal then ताको बाजे pseudo punctate ठीक तो जोटा प्रेजेंट है punctate बा endopunctate कोइ परियो जेटा absent है ताको impunctate कोइ परियो जोतरे which gives the appearance of a canal it is called as pseudo punctate तो punctate खाली तुम्हारा बा जो canal that only present in articulate brachiopoda in articulate it is absent देखो तो ऑर्नामेंटेशन आसीबो ऑर्नामेंटेशन में तुम्हारा फिला कोस्टेट और रिब्स तो एते इंपोर्टेंट इन्सन होबे खाली जस्ट खाली मन रखिबो कोनोसी भी तुमे पैलेंटोलॉजी रो पार्ट पढो समस्त कोन था रेडिएटिंग लाइन था कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइंस था तो एठी तुमे फिला को जो वेरी फाइन थ्रेड लाइक रिजेस थिबो कोस्टेट को जो मॉडरेटली कोस्ट रिज वाला टिके थिबो एंड तुम्हारा रिब्स होची वेरी कोर्स रिब्स था है ना किंतु एठी इंपोर्टेंट इन्स होची प्लिका और सल्कस सो इन ब्राचियोपोडा सेल यू विल गेट लाइक दिस कि जो मार्जिन अच्छे फोल्डेड लाइक
देखि ए जगहटा तुमको तो रीज वाला देखा होची और अपोजिट साइड रे देयर इज अ डिप्रेशन सो दिस इज कॉल्ड एज योर प्लिका एंड द डिप्रेशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज योर सल्कस तो अकॉर्डिंग टू दिस मोर सेल रो नेमिंग भी करा जाय यूनिप्लिकेट बाइप्लिकेट से गोटे प्लिका अछि बा दीटा प्लिका अछि से अनुसार यूनिप्लिकेट बाइप्लिकेट करा जाय सो इट इज एन इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इंपोर्टेंट ऑर्नामेंटल फीचर ऑफ ब्राचियोपोड like plica and sulcus so plica which ko median tree is running along the longitudinal midline of the brachial valve and तुम्हारा तार corresponding depression जोटा आसीबो ता कहउछन्ते sulcus कहउछन्ते sulcus ठीक अछि तबे क्लासिफिकेशन अनुसार तुम्हारा दीटा मेन क्लास आसीबो गोटे होछ कोन इनार्टिकुलाटा आउट होछि आर्टिकुलाटा इनार्टिकुलाटा रे तुमरो अदर ऑर्डर सब अछंती लिंगुला आक्रोटेडिया एर्कोस्टेडिया हला और आर्टिकुलाटा रे ऑर्थ्रिडिया रिंकोनेडिया दसु तार ऑर्डर पूरा पूरा ऑर्डर ऊपर तक से क्वेश्चन प्राय आसुनी मॉर्फोलॉजी रे आसुची बोले सो ब्राचियोपोडा सेल फास्ट मोर कोड कैम्ब्रियन रे अपेयर हेतले जोटा लिंगुला जेबे कैम्ब्रियन रे अपेयर हेतले सेबेटो आज पर्यंत कोन सेम फॉर्म रे अछि सेते ताको लिविंग फॉसिल बोली कहै एंड दीज आर डिफरेंट मोर फॉसिल इन डिफरेंट एजेस so मोर इन केस ऑफ ब्राचियोपोड इंपोर्टेंट थिंग होछि फास्ट ब्राचियोपोड इट इज exclusively marine animal like only marine rekha jay and bottom dwelling then it has two valves one larger one smaller that in equivalve equilateral valve can be symmetrically divided then hinge line where two valves are joined together on the posterior side umbo present on the posterior side anterior line join line of commissure third important then pedicle opening on the ventral valve delphirium pedicle opening on the dorsal valve nototherium then cell form free swimming attached and free swimming the brachiopod to productors achieve attached there are three types of one by spine by valve by pedicle so by valve is your crania by pedicle is your terebrachula and by spine is your sophalogy then brachial skeleton three crura loop like then spiral coil crura is your rincorella brachial loop like uchi terebrachula terebrachula spirifer uchi तुम्हारा spirally coiled then muscle impression adductor deductor or divaricator तो कहा जाए adductor muscle impression helps to close the valve deductor muscle impression helps to open the valve then tomorrow cell form in case in terms of hinge line jodi कहबो ताले straight hinge line is your strophic and curved hinge line is your astrophic then so spiriferid form asho where the length of the cell is less than the width of the cell and the you can say width of the cell is greater than the length of the cell and in case of terebrachula the length of the cell is greater than the width of the cell then cell growth मन रखिबो hollow peripheral growth mixed peripheral growth and hemiperipheral growth in case of hollow peripheral growth the embryo that is protegulum the material will add on the protegulum equally on all sides hemire only anterior side or more and mixture more in the posterior side where it will produce a structure called as palinthrope then cell structure in case of articulata it has three layers one is your periostracum layer primary layer secondary layer periostracum non calcareous and other two are calcareous in case of in articulata we have two layer one is a periostracum and primary layer and in articulata there is a microscopic canal present that is called as, according to that we have three types of cell form one is a punctate cell or impunctate cell or pseudo punctate means you can say endopunctate where that canal present is called as endopunctate where that canal not present is called as impunctate if some structure that appear like a canal is called as a pseudopunctate so next देखो phylum mollusca mollusca जी होते लार्ज फाइलम जोथे कि तुम्हें 9टा क्लास पाई आमे तादरो 3टा क्लास पढछो
सो ये तुम फाइलम अंडर रे मोलुस्का फाइलम अंडर तुम टेरेस्ट्रियल एनिमल पाइबो aquatic एनिमल पाइबो सब प्रकार एनिमल पाइबो सो मैं तीनटा पढ़िबा गोटे होची फेलिसिपोड रुचि गैस्ट्रोपोड गोटे होची सेफालोपोड सो क्लास पेलिस्पोड क्लास गैस्ट्रोपोड क्लास सेफालोपोड सो हम स्टार्ट करें अबाउट फ्रॉम पेलिस्पोड so class Paleoecology is aquatic means which both marine and fresh water मिलिबो it's मोर started from Cambrian मोर Cambrian रो recent पर्यंत तुमे पाइबो होछ कोन Paleoecology तो ना हिज कोन पाई plow shaped foot जो ना हिज कोन Paleoecology बा hatchet shaped foot कहि परिबो तुमे और the other name is your lamellibranchia it is because leaf like gill or other name is also acephala absence of head so Paleoecology जो तीनटा क्लास अछि सॉरी जो इन केस ऑफ मोलुस्का जो तीनटा क्लास हम पढिबा तत्र Paleoecology अछि bivalve other अछि univalve so Paleoecology it is a bivalve animal कि दीटा वाल्व अछि एटा को में अम्बो कहउछ एटा को हम कहउछ हिंज लाइन सेम एज ब्राचियोपोड बट जो ओरिएंटेशन अछि दैट इज डिफरेंट सो इन केस ऑफ tomorrow ब्राचियोपोड केस रे कोन करथला दिस इज ब्राचियोपोड केस रे हम कहउतले द अम्बो साइड इज योर पोस्टीरियर साइड दिस इज अ Paleoecology द अम्बो साइड इज कॉल्ड योर dorsal side this is called your dorsal side this is called your ventral side so सेठी हम कहउतले द posterior extreme end is your umbo but here you can say the dorsal extreme end is your umbo एटा ओटा डिफरेंस हैला dorsal ventral जो तुमे dorsal ventral एमति डिफाइन कलो then how will define the posterior anterior so the brachiopod cell रे कोन the valves are equivalve but in case of it is called, in case of brachiopod they are inequivalve kon inequivalve and in case of Paleoecology the valves are equal the two valves are equal shape this is a valve another valve is same like this but it is inequilateral so if you divide this the two half will be unequal but in case of brachiopod if you divide this the two valves are equilateral so it is important ଜିନିଷ होची equivalve inequilateral so if you divide the valve it will be two unequal shaped the larger side is called the posterior the smaller side called as your anterior but there are some cephalopod which are equivalve and equilateral sorry some Paleoecology they are equivalve and equilateral so in that case you cannot determine which side is posterior which side is anterior but most of the case re tomorrow inequilateral asiba so that larger side is posterior and smaller side is your anterior so these are the different sides of the Paleoecology then comes to muscle impression so the जोड़ा ब्राचियोपोड केस रे तुतला तुमरा दीटा मसल इंप्रेशन थिला गोडो एडक्टर डिडक्टर एडक्टर क्लोज करथला डिडक्टर ओपन करथला here also we have two muscle impression one is adductor muscle impression which helps to close the valve adductor muscle impression ko kare
helps to close the valve. It मोर ये जगह रे present अच्छी मोर कौन adductor muscle impression. So adductor muscle impression helps to close the valve. So adductor muscle impression अच्छी. According to that, we have two types of cell form. One is monomerian, one is dimerian. So monomerian होची single muscle impression थिबो, dimerian ने दीटा muscle impression थिबो, one on the posterior side, another one on the anterior side. If the single थिबो, that present in the posterior side only. So monomerian रो example होची pectin, Austria, Griffia, exozyra. These are the example of monomerian. So monomerian is single muscle impression thibo, that to present on the posterior side. Dimerian is dita muscle impression thibo, one posterior side, one anterior side. There are two types, which is anisomerian or isomerian. So anisomerian. So in case of anisomerian, the posterior side is the larger one. In case of isomerian, both muscle impression are of same size. So anisomerian example to Mytilus no, isomerian example hochi Venus. So the dita muscle impression achandi. So the two muscle impressions, adductor muscle impression are joined by a line that is called as your pallial line. Pallial line. So जो pallial line अच्छी, two types of pallial line. In one type, the pallial line is completely parallel to the margin, but there is no depression within the along the margin. That is called as your that cell form is called as your intergree palliata. And some are with sinus, that is called as your palliata. So the pallial line, according to pallial line or shape of the pallial line, there are two types of cell form. One is your intergree palliata, another is your palliata. So in intergree palliata, the pallial line is completely parallel to the margin. In palliata, there is a depression, whether on the anterior side or posterior side. So that depression is called as your pallial sinus or pedal sinus. Depression को क्या pedal sinus को ना pallial sinus को. So if it is present on the posterior side, it is called as your pallial sinus. If it is present on the anterior side, it is called as your pedal sinus. So जहाँ देखा था anterior side रही two pedal sinus can present on the posterior side, it called as your pallial sinus. So these are more all about adductor muscle impression. So adductor muscle impression helps to close the valve. So there may be a single muscle impression present or a two muscle impression present. If there is a single muscle impression present, that is present on the posterior side. If there are two muscle impression present, one will be sometimes both are same size, one or sometimes one is larger, one is smaller. According to that is called as anisomerian, one is called as isomerian. So in case of anisomerian, the larger one present on the posterior side. So larger one kौन था? Posterior side था. ताकि जो मन join करने जो line that करा जो pallial line, तो pallial line may be smooth है पारे, but it has some depression. यदि smooth थी वो ताल तक को से cell form को intergree palliata कौन थी? यदि depression था ताल form को कौन थी palliata. Then the two valves, जो palliata अच्छी, जो depression अच्छी, that may be present on the posterior side or anterior side. If present on the posterior side, it is called a pallial sinus. If present on the anterior side, it is called as your pedal sinus. Then comes to ligament. So ligament, it helps to open the valve. It helps to open the valve. So ligament same size answer. There are three types. One is your
alveolar, multivincular and paravincular. And according to position, three types. Roji amphidatic, roji opisthodatic, and roji prosodatic. So alveolar consists of single layer of muscle. Multivincular consists of multiple or bundle of muscle. Paravincular consists of muscle of cylindrical shape. Then amphidatic, opisthodatic, prosodatic. It is on the basis of position of the ligament. If ligament present extending from posterior side to anterior side, it is called as your amphidatic. यदि तुम्हारा ligament कौन था below the umbo था, right? So if it extend from posterior to anterior side, it is called as your amphidatic. कौन कहता है amphidatic? Example तुम्हारा glycemeris आसियो. Opisthodatic, which is the ligament placed to the posterior of the umbo. Umbo ru posterior side को हेले that called opisthodatic, and prosodatic present on the anterior. So amphidatic both तुम्हारा posterior anterior पर्यंत extend करथिबो. Prosodatic only, opisthodatic only posterior side रे थिबो, prosodatic को थिबो anterior side. So opisthodatic example होय तुम्हारा ट्राइगोनिया. आ prosodatic example होची Venus. So on the basis of तुम्हारा गोटे होची shape size, जोटा कि single layer, multiple layer, cylindrical. एटा होची position अनुसार both anterior posterior extend करथिबो. Opisthodatic posterior side थिबो, prosodatic anterior side थिबो. तीन तो पूरा umbo facing direction अनुसार भी different shell form करा जाए. लाइक कौन अछि हमरो प्रोसोगैर और ताको प्रोसोक्लाइन कहते, ओपिस्थोगैर बा ताको ओपिस्थोक्लाइन कहते, तापरे ऑर्थोगैर बा ताको आक्लाइन कह जाए, आ गोटे होची स्पाइरल. So prosogyr रे मोर the umbo point towards the anterior side, opisthogyr रे the umbo point towards the posterior side, orthogyr रे the umbo point towards itself, towards each other, and spiral रे towards itself or towards the center of the valve. In this case तुम्हारा एटा जो umbo टा face कर चुका है towards the anterior side, so it is a prosogyr thing. It is a prosogyr thing. Or you can say here they point towards the anterior, both towards the anterior. Here they point towards each other, so they can put in the arc line, and this is spirally coiled. ठीक है जी. Spiral coil रे तुम्हारा एटा ग्रिफी आसीबो. So it towards towards itself जोटा तुम्हारा exogyr आसी towards each other pectine आसीबो. लाइक ओपिस्थोgyr रे तुम्हारा ट्राइगोनिया आसीबो. ऑर्थो तुम्हारा प्रोसोग्यार रे तुम्हें आर्का पाइबो. लाइक सब एग्जांपल मन रखिबो. थोड़ा वाला तुम्हारा मसल इंप्रेशन, अंबोरो शेप साइज. देन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आसीबो तुम्हारा डेंटिशन. आसीबो देखो, this comes to most important part होची डेंटिशन इन पेलिस्पोड. सो पेलिस्पोड रो जो तुम्हारा टीथ प्रेजेंट थाए बा टीथ एब्सेंट थाए, तो टीथ आर प्रेजेंट और एब्सेंट, that will be on the hinge line. The teeth present थाए ताले along the hinge line थिबो, यदि absent थाए along the hinge line थिबो muscle पाइबो. कोन पाइबो muscle पाइबो. then teeth जोटी present थाए गोटे valve रा teeth ले तार corresponding valve other corresponding तुम्हारा socket तार other valve रे पाइबो. So in brachiopod, sorry in pelispod there are two types of teeth पाइबो. तुम्हें गोटे cardinal teeth आ गोटे होची lateral teeth. कोन को पाइबो cardinal teeth गोटे lateral teeth. So cardinal teeth located perpendicular to the hinge line, and lateral teeth that nearly parallel to the hinge line. मोटे example रे देखि दवा.
see, these are teeth that almost perpendicular to the hinge line. So that are called as your cardinal teeth, and these are teeth that approximately parallel to the hinge line. That is called as your lateral teeth. So two types of teeth you'll find in case of Paleoecology. So according to the arrangement of the teeth along the hinge line, there are different types of dentition found in Paleoecology. So first which tomorrow taxodont, which is numerous teeth fiber parallel to each other along the hinge line. Small numerous teeth fiber along the hinge line, जोटा कि uniform size रही example tomorrow उची आर्का नोकुला ग्लिसमेरिस. तो example it is very important. सबले क्वेश्चन तुम्हारे एग्जांपल पड़े जेते क्वेश्चन पड़े कोन एग्जांपल ही पड़े तुमको सेट पे सब जगह एग्जांपल वाला से मन रखा पड़े. Then in case of Caesarodont you'll find along बोला lateral क्या along बोला along hinge line बोले ना हाँ perpendicular है cardinal teeth. Then what is Caesarodont रे you'll find sharply diverging teeth. Cardinal वे कोन sharply diverging अछंती. अब एटी बहुत तुम्हें कार्डिनल आओ लैटरल टीथ पाइबो कोडा स्क्यूजोडोंट रे एग्जांपल होची यूनियो ट्राइगोनिया. सो नेक्स्ट आइसो तुमरा आइसोडोंट. तो आइसोडोंट रे तुमरो दीरा टीथ थिबो है टू लार्ज सब इक्वल टीथ प्रेजेंट जोटा कि कार्डिनल पोजीशन थिबो बा कार्डिनल टीथ थिबो. एग्जांपल होची स्पॉन्डिलोसा पेक्टिन. डेस्मोडोंट ता स्पेशल जोटा कि हाईली रिड्यूस्ड टीथ थिबो बहुत छोटो छोटो थिबो highly reduced. That example होची फोलासा माया. So आइसोडोंट रे तुमरो दीटा सब इक्वल लार्ज थिबो कार्डिनल. डेस्मोडोंट रे तुमरो हाईली रिड्यूस्ड टीथ थिबो. हमरे डाइसोडोंट रे तुम्हें दीटा आइडेंटिकल lateral teeth पाइबो equal in size. दीटा आइडेंटिकल lateral teeth पाइबो equal in size. एग्जांपल होची मिटिलस. तार पैचिडोंट होची तमरा लार्ज ग्लूप एंड ब्लंट टीथ पाइबो एला सु ठीक है ब्लंट वाला टीथ पाइबो along the hinge line. एग्जांपल होची हिपोराइट्स आओ चामिदे. Then heterodont is the most advanced type of dentition. Paleoecology सूत्र की वेल डेवलप तुम्हें कार्डिनल टीथ आओ लैटरल टीथ पाइबो. एग्जांपल होची मोर कार्डिटा आओ वेनस. देन एनाबोलोडोंट रे मोर ट्रू टीथ एंड सॉकेट एब्सेंट थिबो. पैंटाडोंट होची तमरो जोटा कि स्क्यूजोडोंट और हेटेरोडोंट. स्क्यूजोडोंट रे भी तुम्हें लैटरल टीथ पाउतला आओ कार्डिनल टीथ पाउतला. हेटेरोडोंट रे टिक एडवांस टाइप रो कार्डिनल टीथ और लैटरल टीथ पाइबो. ताको इंटरमीडिएट आइसो कोन पैंटाडोंट. एग्जांपल होची एलोडिस्मा. एडेंटुलस और तुम ताको पालियो कोंचा कहउछो जोटा लैक्स ऑफ एनी काइंड ऑफ टीथ. So these are different types of tumora teeth. That's what tumora taxodont रा example होचा आर्का नुकुला ग्लिसमेरिस. तो सीजोडोंट रा यूनियो ट्राइगोनिया. आइसोडोंट रा स्पॉन्डिलोस पेक्टिन. डेस्मोडोंट रा फोलास माया. डाइसोडोंट रा मिटिलस. पैचिडोंट रा हिपोराइट्स हो चामिदे. हेटेरोडोंट रा कार्डिटा वेनस. एनाबोलोडोंट रा एलोडिस्मा. पैंटाडोंट रा एलोडिस्मा. एडोंटुलस पाइलेकोसरा लिमाचराक्स. सो एटी तुमारो टैक्सोडोंट रे तुमारो न्यूमुलस स्मॉल टीथ थिबो पैरेलल टू ईच अदर. स्क्यूजोडोंट रे शार्पली डाइवर्जिंग टीथ थिबो और लैटरल कार्डिनल बोथ थिबो. आइसोडोंट रे टू लार्ज सब इक्वल टीथ थिबो. देन डेस्मोडोंट रे टीथ आर हाईली रिड्यूस्ड. देन डाइसोडोंट रे टू आइडेंटिकल लैटरल टीथ थिबो आइडेंटिकल लैटरल टीथ. पैचिडोंट रे तुमारो ग्रुप ऑफ ब्लंट टीथ थिबो. हेटेरोडोंट रे मोर एडवांस टाइप बोथ लैटरल और कार्डिनल प्रेजेंट. मोर एटा अछि एटा होछि हेटेरोडोंट टाइप रो माने मोस्ट एडवांस. तबर एनाबोलोडोंट होछि कि तुमरो एलोरिज्मा आछो जो कि ट्रू टीथ एंड सॉकेट आर एब्सेंट. देन पैंटाडोंट रे इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सीजोडोंट एंड हेटेरोडोंट जो कि इंटरमीडिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ तुमरो लैटरल टीथ और कार्डिनल टीथ. अब एडेंटुलस रे तुमरो कोनोसी टीथ आसीबो नाही. This is also very important. Question आसे तुम्हारा कि इकोलॉजी और हैबिटेट ताकर केम थाए.
सो ऑर्गेनिज्म माने तुमर आइदर ओशन फ्लोर बा बॉटम रे तुमर ड्वेल करते अदरवाइज दे आल्सो बोर होल और दे ट्राई टू सर्वाइव बिलो द सॉफ्टर सेडिमेंट्स आइदर सॉफ्टर सेडिमेंट रे कवर होकर रुहंती नहले तुमर होल खोली रुहंती नहले एबव द सरफेस रहते एबव द सरफेस रहले ताको एपिफोनाल कहा जाए बिलो द सरफेस जदि रहबा ताको इनफोनाल बोली कहा जाए है तो से अनुसार एपिफोनाल आसीबो तुमरो एग्जांपल कार्डिटा आर्का द लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट तो इनफोनाल सैलो बोरर इनफोनाल डीप बोरर तो इनफोनाल सैलो बोरर माने जोटा सॉफ्टर सेडिमेंट भितरे खाली कवर्ड होकर रुहंती एग्जांपल तुमरो सिरेना डाइवर्सेला आ इनफोनाल डीप बोरिंग रे माया एंसिस सोलेन एटा बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल सब बहुत तुमरो बोरिंग कंडीशन आसीबो बा इनफोनाल कंडीशन आसीबो तो इनफोनाल पेलिस्पोड उरा आसीबो एपिफोनाल तुमरो काटा आसीबो फ्री स्विमिंग और बाइसेली अटैच्ड एपिफोनाल होची तुमरो पेक्टिन देन एपिफोनाल सीमेंटेड फॉर्म होची की ऑस्ट्रिया ग्रिफिया एंड बोरिंग फॉर्म इज आल्सो कंसीडर्ड in case of infonal but boring can be any on the rock or rock strata he pare ki konosi sea floor he pare सेत पे तुको से अलग रखा हो बोरिंग फॉर्म पे तुम्हारा फोलास आसीबो जोटा कि बोर इनटू द रॉक लिथोफेगा आसीबो एंड टेरेडो द बोर इनटू द वुड जेतु सेत पे को बोरिंग फॉर्म्स अलग को आछे एपिफोनाल इनफोनाल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर को आजे कि फ्लोर तळे भीतर रहउछन बा बाहर रहउछन हला सो दीज आर डिफरेंट वेरी इंपोर्टेंट टाइप ऑफ तुमरो पेलिस्पोड एग्जांपल वाला बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो सो तुमरो पेलिस्पोड तुमरो प्लाव शेप फूड को और लीफ लाइक गिल्स और एब्सेंस ऑफ हेड तो से अनुसार तुमरो पेलिस्पोड को लामेली ब्रांचिया को और आसाफला aquatic एनिमल कैमरन प्रेजेंट परंत अछंती देन तुमरो दीटा वाल थिबो सेम साइज बट इनिक्विलेटरल सेट पे इक्विवाल्व इनिक्विलेटरल अनलाइक ब्राचियोपोड रे कोन थाउची इनिक्विवाल्व इक्विलेटरल अदर तुमरो मसल इंप्रेशन रुच एडक्टर मसल इंप्रेशन जोटा हेल्प्स रे क्लोज द वाल्व तो एडक्टर मसल इंप्रेशन मे बी गोटे थाए नले दीटा थाए सिंगल मसल इंप्रेशन देले मोनोमेरियन को आजिबो दीटा थिले डायमेरियन को तो मोनोमेरियन रहले इट प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड सो पोस्टीरियर साइड हम केम डिसाइड करनती द लार्जर पोर्शन ऑफ द वाल्व दैट इज पोस्टीरियर साइड यदि दीटा मसल इंप्रेशन थिबो मे बी सेम साइज थाई पारे नले डिफरेंट साइज थाई पारे यदि सेम साइज देन इट इज आइसोमेरियन यदि डिफरेंट साइज थिबो अनाइसोमेरियन सो अनाइसोमेरियन रो पुनी जोटा लार्जर साइड लार्जर तुमर मसल इंप्रेशन थिबो दैट विल बी ऑन द पोस्टीरियर साइड दीटा मसल इंप्रेशन को जो लाइन जॉइन करे तक कोंदे पैरेलल लाइन अनुसार दीटा टाइप रो सेल फॉर्म आसी सिनिपैलेटा इंटरग्रिल परेटा सिनिपैलेट रे तुमर डिप्रेशन थाए यदि पोस्टीरियर साइड डिप्रेशन थाए ताको पैरेलल साइनस कहंती यदि एंटीरियर साइड डिप्रेशन थाए पैरेलल पेडल साइनस बोल यदि पैरेलल थिबो ताले इंटरग्रिल पैरेलल तापर लिगामेंट आछबो दैट हेल्प्स टू ओपन द वाल्व सो लिगामेंट तुमरो अल्विनकुलर मल्टीविनकुलर पैराविनकुलर आछबो ऑन द बेसिस ऑफ शेप साइज तो अल्विनकुलर रे सिंगल लेयर मसल थाए पैराविनकुलर रे सिलिंड्रिकल शेप मसल थाए मल्टीविनकुलर रे लेयर से मसल थाए सीक्वेंस बोली को मन अछि ना नहीं तो सुनो आगे नेक्स्ट हो जी तुमरो आछबो तुमरो एम्फिडेटिक प्रोसोडेटिक ओपिसोडेटिक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द एम्फिडेटिक हला प्रेजेंट ऑन बोथ साइड एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर ओनली पोस्टीरियर रहले इट इज ओपिसोडेटिक ओनली एंटीरियर रहले प्रोसोडेटिक then on the basis of umbo pointing re tumara asho prosogar umbo pointing towards anterior example arca venus तुम नहीं परियो तापरे opiso gar जोटा कि umbo pointing posterior side the paleopectin नहीं परियो then in case of orthogar pa arcline towards each other for example also pectin then spiral जोटा कि towards itself example asho griffia exogyra एक तोरे डेंटिशन पार्ट देखिया बोले तुम्हारा दीटा टाइप रो टीथ थाउची गोटे लैटरल टीथ गोटे कार्डिनल टीथ प्रेजेंट पैरेलल टू द हिंज लाइन एंड कार्डिनल टीथ प्रेजेंट परपेंडिकुलर द हिंज लाइन तो टाइप्स ऑफ डेंटिशन है टैक्सोडोंट आसीबो गोटे के स्मॉल न्यूमरस टीथ थाए पैरेलल टीथ थाए एटा एग्जांपल हो आर्का नुकुला गिस्मेरिस देन तुमरा आसीबो तापरे स्किजोडोंट रे टू टाइप्स ऑफ टीथ थिबो लैटरल कार्डिनल बोथ प्रेजेंट थाए हला
एग्जांपल होची यूनियो ट्राइगोनिया देन आसीबो तुमरा स्किजोडोंट परे आइसोडोंट होची टू सब इक्वल लास्ट टीथ थिबो जोटा कार्डिनल टीथ थिबो एग्जांपल होची स्पॉन्डिलस पेक्टिन देन आसीबो स्किजोडोंट रे तुमरा सॉरी डाइसोडोंट रे मोगा थाए टू सब इक्वल टू पैरेलल लैटरल टीथ थाए तीरा लैटरल टीथ है तो डाइसोडोंट रे एग्जांपल होची मिटिलस तार पे डेस्मोडोंट आसीबो जोतरे की टीथ आर हाईली रिड्यूस्ड तार एग्जांपल आसीबो कोलास माया तापर आसीबो तुमरा हेटेरोडोंट रे मोर एडवांस टाइप ऑफ टीथ बहुत लैटरल प्रेजेंट थांती एग्जांपल होची कार्डिटा वेनस तो पैचिडोंट आसीबो जोतरे की ग्रूव ब्लंट टाइप ऑफ टीथ थिबो एग्जांपल होची हिपोराइट्स चामिदे तापर आसीबो तुमरा एलोरिज्मा सेटा कोन एनामालोडोंट रे टीथ ट्रू टीथ एंड सॉकेट आर एब्सेंट एग्जांपल होची कोन एलोरिज्मा तापर आसीबो तुमरा पैंटाडोंट जोटा कि इन बिटवीन स्किजोडोंट एंड हेटेरोडोंट एग्जांपल होची एलोडेस्मा तापर एनी टाइप ऑफ टीथ एंड एब्सेंट दैट इज होची एडेंटुलस एग्जांपल होची लिमा अचरक्स ती मन रखियो देन तुमरा एपिफोनल रे आछबो कार्डिटा आर्का इनफोनल रे तुम टोटल सिरेना रेबेसलम या एंटीसोलेन फोलास लिथोपा टेरोडो सब इनफोनल आसी परिबो बा बोरिंग फॉर्म में तुम फोलास लिथोपा रखियो जोटा कि रॉक बोरर और वुड बोरर देन एपिफोनल रे ऑस्ट्रियाग्राफी आछबो जोटा कि परमानेंट अटैच टू सबस्ट्रेट फ्री स्विमिंग और बाइसेल अटैच पेक्टिन फ्री स्विमिंग हे पारे न लॉट बाइसेस तार बाहर था जो फुट लाइक सेटा देके अटैच हेता तो दीज आर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ important types of paleogeography. So next comes to class gastropods. Gastropods means gastro means stomach. Podos means foot. That means कि कौन पेट रे चले ना कौन the foot present on the stomach side or the ventral side हम कौन सेतना ता है कौन गैस्ट्रोपोड सो गैस्ट्रोपोड इज यूनिवाल्व एनिमल जो यूनिवाल्व कि तार गोटे साइड तो कौन थाए क्लोज थाए एंड अनदर साइड ओपन थाए ठीक अछि मैं शंख फुंकुच भावन जी ऊपर जो कोन आइ जी सेटा होची होल कराई जी परे किंतु एक्चुअली से पार्ट कौन थाए कि एमती क्लोज थाए है तो ये क्लोज पार्ट को हम कहउछंदी पोस्टीरियर पार्ट ओपन पार्ट को कहते एंटीरियर सब केस रे जते भी ऑर्गेनिज्म अछंती सब केस रे द ओपन साइड इज कॉल्ड एज योर एंटीरियर साइड तो ब्राचियोपोड रे पड़लो ब्राचियोपोड रो जो ओपन हुए तळ साइड रे जोटा हिंज लाइन अछि कि अम्बो साइड सेपट ओपन हुए तळ साइड ओपन हुए सेतवे से साइड को अपर्चर कहै जाय ये भी ओपनिंग पार्ट होछि तुम्हारा अपर्चर क्लोज पार्ट होछि तुम्हारा प्रोटोकॉन्स कहि परिबो बा पोस्टीरियर साइड कहि परिबो जोटा कि एक्सेप्शन होछि तुम्हारा इन केस ऑफ पेलिस्पोड जोटा कि ओपन साइड को तुम वेंट्रल कहू ना सो दिस इज ए गैस्ट्रोपोड जदि कि एटा को तुम पोस्टीरियर साइड कहू जोटी प्रोटोकॉन साइड अपर साइड कहू एंटीरियर साइड ठीक एंड तुम जो पट साइड को अपर्चर रहउछि सेटा को तुम वेंट्रल साइड कहि परिबो एंड एपट को डोर्सल साइड कहि परिबो opposite to the aperture so it rela to the upper side of me ventral side कहबा and this side is called as your dorsal side तो ब्राचियोपोड पेलियोपोड रे माने दे आर सिंपल फॉर्म बट इन केस ऑफ गैस्ट्रोपोड दे आर कॉइल्ड फॉर्म कौन से कॉइलिंग दिखाते तो ईच कॉइल को हमें कौन थी होल ईच कॉइल को कहा जाए होल सी हियर ईच कॉइल को हमें कौन थी होल दीटा होल जोटी जॉइन होई थांदी ताको कहते सुचर कौन सुचर सो ग्रेजुअली तुम्हारा होल जो डायमीटर इंक्रीज करे कांस्टेंट रहे डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बट द लास्ट होल ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड एज योर बॉडी होल एंड ऑल अदर टुगेदर कॉल्ड एज योर स्पायर राइट
आ कोनदी बॉडी होल एटा कोनदी कोन स्पायर बोली कोनदी सो जो स्पायर पार्ट अछि तादरे ऑर्गेनिज्म कोनो से लिविंग पार्ट न थाए जोटा बॉडी होल थाए सेटा तमरो ऑर्गेनिज्म रो लिविंग पार्ट थाए यदि ऑर्गेनिज्म लिविंग तमरो पार्ट अछि कि लिविंग बॉडी पार्ट अछि दे ऑल प्रेजेंट विद इन द बॉडी होल so this comes to the aperture so this is your aperture this is the opening of the gastropod present on the anterior side so the margin of the aperture is called as your peristome हो जाए peristome तो aperture margin तुम देखो एगुरा this called as your peristome and the aperture it is covered by a thin calcareous plate which is called as your upper column तो aperture has two canals aperture दीटा canal थाए तो गोटे होची कि वाटर एंट्री पाई गोटे वाटर एग्जिट पाई सो एटा देखो गोटे कैनाल टाइप रही छि एठी आ गोटे कैनाल टाइप रही छि सो गोटे वाटर एंटर पाई गोटे वाटर एग्जिट पाई तो वाटर एंटर जो पट करे एटा तमे aperture कहबा then this will be the anterior side of the aperture this will be the posterior side of the aperture so जो पटे एंटर करे ताको कहंती सिफोनल कैनाल जो पटे एग्जिट करे ताको कहंती एनल कैनाल अच्छा मोर जो पेरिस्टोम थाए आ गोटे कथा बोलिली पेरिस्टोम रो जो मार्जिन थाए तार दीटा लेयर थाए गोटे आउटर लेयर थाए गोटे इनर लेयर थाए तो गोटे आउटर लिप कहते गोटे इनर लिप कहते है तो गोटे सिफोनल कैनाल थाए गोटे एनल कैनाल थाए जो सिफोनल कैनाल वाटर एंटर करे एनल कैनाल वाटर एग्जिट करे आउ केतो केस रे तुमर सिंगल कैनाल पाइबो जोटे कि एथरे तुमर सिफोनल कैनाल एनल कैनाल नाही गोटे सेम खाली गोटे कोन अछि ए गोटे होल अछि एटा को कहते कोन साइफोन बोली कहते है गोटे मेबी तुमर डबल कैनाल थाए नले मेबी सिंगल कैनाल थाए जो सेल फॉर्म रे तुम्हारा डबल कैनाल थाए ताको कहते हमें सिफोनोस्टोमाटस जो सिंगल कैनाल थाए से सेल फॉर्म कहते होलोस्टोमाटस so जो सिफोनोस्टोमाटस cell has two canals to for the water movement you can say दीटा कैनाल थाए फॉर द वाटर मूवमेंट गोटे वाटर एंटर करे गोटे एग्जिट करे दैट्स वाटर मूवमेंट इज कंटीन्यूअस होलोस्टोमाटस रे तुमरो गोटे सिंगल कैनाल थाए वाटर मूवमेंट पाई जोतरे कि वाटर गोटे कैनाल ले एंटर करबो एंड से कैनाल एग्जिट करबो सेते वाटर मूवमेंट सेटी डिसकंटीन्यूअस बा पल्सेटरी थाए थर्ड तुमरो कैनाल ले वाटर मूवमेंट देन कम्स टू द coiling of the gastropod so gastropod show two types of coiling on the basis of plane of coiling तो जी तुम्हारा प्लानी स्पाइरल coiling और होची हेलिकोइडल coiling तो एगला सब जो हेलिकोइडल coiling जोटा कि गोटे वर्टिकल प्लेन रे होची एंड प्लानी स्पाइरल coiling हेले गोटे हॉरिजॉन्टल प्लेन रे लाइक दिस हबा तो कोनदी प्लानी स्पाइरल coiling तो हेलिकोइडल coiling तुम जे जहां भी नहीं परबे एग्जांपल बोलुटा हो म्यूरेक्स हो जहां भी एग्जांपल नहीं परिबो हेलिकोइडल coiling रो प्लानी स्पाइरल होची एग्जांपल होची प्लानर बेस कनो प्लानर बेस देन तमरो डायरेक्शन ऑफ coiling अनुसार देयर आर टू टाइप्स गोटे होची सिनिस्ट्रल आ गोटे होची कोन डेक्स्ट्रल coiling गोटे होची तुम्हारा सिनिस्ट्रल coiling गोटे होची डेक्स्ट्रल coiling तो जो सिनिस्ट्रल coiling होची इट इज लाइक दिस इट इज एंटी क्लॉकवाइज एटा कोन होची इन द एंटी क्लॉकवाइज आसीबो और डेक्स्ट्रल coiling आसीबो क्लॉकवाइज है पाइसो क्लॉकवाइज so sinistral coiling is called anti-clockwise coiling and dextral coiling is called your clockwise coiling तुम्हारे sinistral example फाइसा planar base and dextral example तुम्हें बोलोटा म्यूरेक्स तुम्हारा और बहुत एग्जांपल अच्छी सब जगह होचे तो कौन मोस्टली डेक्स्ट्रल तो जोटा तुम्हारा सिनिस्ट्रल ताको लेफ्ट हैंडेड कोचो जोटा डेक्स्ट्रल तुम्हें राइट हैंडेड कोचो राइट हैंडेड इन द सेंस कि डेक्स्ट्रल को तुम्हें जो फॉर्म अछि ताको राइट हैंड रे होल्ड करि परिबो
अपर्चर है आपको तुम अपर्चर को होल्ड करियो कोठी लेफ्ट हैंड तो एटा होची तुमरो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग तो जो कॉइल होची सेल गुरा से तो सेल मे बी फ्यूज टुगेदर ऑन द सेंटर ऑफ द सेल से माने फ्यूज हे पारंती अदरवाइज सेंटर ऑफ द सेल टा रे फ्यूज न हो पारंती एम्प्टी रहे ये जगह देखो जो कॉइलिंग हेची सेंटर ऑफ सेल से माने फ्यूज हे कि गोटे सेंट्रल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करछन्ती ताको हम कहउछन्ती कॉलुमेला यदि से माने सेल आर नॉट फ्यूज टुगेदर दे प्रोड्यूस एन एम्प्टी स्पेस or empty cavity within the cell that is called as the umbilicus जदि गोटे columnar structure produce हो on the center of the cell that is called as the columella that cell form is called as your imperforated तो कौन करो imperforated माने perforation किछि नहीं यदि umbilicus हो ताले एटा को perforated बा perforation तादर आसे तरा coiling This comes to different cell form. It's very important. तुम्हारा Gastropod coiling important. like helicoidal, planispiral planar base आसुची. तुम्हें sinistrale तुम्हें मन रखियो फाइसा planar base very important example. सिंपली तुम्हारा different cell form आ रहा बहुत important. पास जो Trochiform turbinate तुम्हारा sharp and acute आसीबो apex है and तुम्हारा gradually increasing diameter आसीबो Trochiform रे आसीबो flat base so Trochiform रे sharp acute आसीबो apex and diameter gradually increase करो important होचे acute apex थिबो flat base थिले Trochiform acute apex concave base थिले convex base थिले एटा हबो कोन turbinate example Trochos and turbo then turreted form आसीबो जोटी की तुमरा very long spire तार आसीबो and step like spire आसीबो ताको terrace form को आ जाय example is turritella cylindrical diameter gradually increased होगा then constant रहेगा sorry देखो in case of cylindrical the diameter increase करिवो fast increase करिवो then constant रहेगा example होची तमरो pupilla voluta then globular form रे होची main important जिंस होची कि rounded aperture globular कोन main होची rounded aperture तार main characteristic a very small तुम्हारा spire रहे तापरे fusiform आसीबो this is a fusiform form जोटा कि spindle shape रे आसीबो centrally तुम्हारा सबटा अधिक diameter बा both side को tapering end भलिया रहतो त कोन देखो spindle form example तुम्हारा fusinous नहीं परिबो नहले example you can take murex convolute रे तो last hole will cover all the hole example तुम्हारा cypria जोटा कौडी कोच है ना दैट इज होची हाइपरिया तार साइपरिया रा गोटे कैरेक्टरिस्टिक होची इट हैज क्रेनुलेटेड लिप कोन इट हैज क्रेनुलेटेड लिप तबर ऑरिफॉर्म वेरी शॉर्ट टाइप रो थिबो ऑरिफॉर्म रा मेन कैरेक्टरिस्टिक होची कोन इट हैज अ वेरी लार्ज अपर्चर व्हिच लुक लाइक अ ईयर सेतबे ताको ईयर सेल बोली कहै तबर कोनिकल कोन शेप रहितबो and तारा होची कि parallel lips थिबो इंपोर्टेंट कोन इट हैज parallel lips एग्जांपल होची कोनस वर्मिफॉर्म ट्विस्टेड worm like हेथिबो पार्टेलिफॉर्म इट लुक लाइक ए कैप papaya form it has also constant diameter and rounded aperture एग्जांपल होची pupa तदर इंपोर्टेंट कोडा लेला मोर गोटे होची ऑरिफॉर्म रहूची जोटा कि कोन कहंदी ईयर सेल थाए कौन कहते एयर स्ट्रेस एग्जांपल होता है हालियोटिस सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज रॉक क्लिंजर कौन कहते रॉक क्लिंजर देन कोनिकल ले पैरेलल लिप्स थिबो मोर ग्लोबुलर रे राउंडेड थिबो होछ कोन अपर्चर एग्जांपल तारो नाटिका टूरिटेड टेरेस फॉर्म स्टेप लाइक थिबो हे देखो इंपोर्टेंट मोर टाइप ऑफ सेल फॉर्म तोरल मोर गैस्ट्रोपोड रा सेल फॉर्म आ गोटे जिन भूली गल
अच्छा डिस्कॉर्डाल जोटा अछि सेटा अछि प्लानिस्पाइरल कॉइलिंग ହେଲା तो एटा ट्रोचिफॉर्म फ्लैट बेस अछि टर्मिनेट मोर कन्वेक्स बेस अछि एटा टूरिटेड वेरी लॉन्ग स्पायर अछि हैला स्टेप लाइक अछि दिस इज तुम्हारा सिलिंड्रिकल जोटा कि तुम्हारा कांस्टेंट डायमीटर पाखा पे कैसे वेरी शॉर्ट स्पायर दिस इज ग्लोबुलर जोतरे तुम्हारा राउंडेड अपर्चर है दिस इज योर साइफन कोले सिंगल अछि एठी सिंगल टर्म को कहते साइफन बोली कहते ग्लोबुलर साइफन देखा एटा आसीबो म्यूरेक्स जोटा फ्यूजिफॉर्म आसीबो दिस इज कन्वोल्यूट फॉर्म जोटा कि गोटे होल खाली देख परियो एंड क्रेनुलेटेड लीफ रहउची दिस इज ऑरिफॉर्म कौन सी दिस इज ऑरिफॉर्म योर लाइक हाल्यूटिस रॉक क्लींजर दिस इज योर कोनिकल जोटा कि पैरेलल लीफ्स आसीबो दिस इज वर्मीफॉर्म जोटा कि ट्विस्टेड आसी दिस इज पार्टेलिफॉर्म जोटा कैप लाइक आसी एंड दिस इज पपाया फॉर्म ना होची डिफरेंट सेल फॉर्म्स This comes to ornamentation. So it will be ornamented feature बहुत important आ रहा. Spines आसीबो तुम्हारे needle like तापरे nodules थोड़ी small rounded projection तापरे axial costrate आसीबो तो एगरा सब अच्छी जो रीज वाला देखछो these are axial costrate है ना अब ए जो rounded अछि ता tubercles कहते small रीज टाइप रो अछि एक्सियल कोस्टेट आसीबो स्पाइरल कोस्टेट आसीबो जोता कि कंसेंट्रिक स्ट्रक्चर आसीबो पिटेड स्कल्पचर आसीबो स्मॉल डिप्रेशन पिट्स ऑन द सेल स्ट्रक्चर्स सेगुरा आसीबो स्मूथ जोति कि विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन भी स्ट्रक्चर आसे तुम एटा देखबो कि बहुत स्मूथ अछि विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन डिजिटेशन तुमर एटा को डिजिटेशन कहते जोटा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थिबो है तो एगुला सब तुम्हारा so these are different types of tomorrow ornamented feature that present in the gastropod so jodi konosi gastropod re you will find any ornamentation that present from the protocols to the aperture or from protocols into the aperture element that is called as varices kondo varices jodi ki ethi tomara pura gote ornamented feature completely end पर्यंत अछि बाय जो ट्यूबरकुल्स गुरा छै राउंडेड है कि से कंप्लीटली एंड पर्यंत अछि तो एटा को तुम वेरिसेस बिली कहबे सो दीज आर तुमरो ऑर्नामेंटेड फीचर सो गैस्ट्रोपोड तुमरो यूनिवल्व one end closed one end open and the coil form open end is your aperture closed end is your protoconch aperture side और close end को protoconch कहा जाए open end को aperture कहा जाए protoconch end is your posterior aperture is your anterior side then coiled form था each coil को कौन कहते हैं it called as hole the last hole is called as your body hole all other combinedly called as your spire the holes are connected or joined by sutures then the aperture part the margin of the aperture is called as your peristome and the covering of the aperture is called as your operculum the peristome has two layers outer lip inner lip aperture may have two canals or one canal two canal one is your siphonal canal another is your anal canal where water movement will be continuous cell form will be called as siphonostomatous if that is single canal that is called as your siphon जोटा कि water movement volsatory called as hollow stomatous then coiling there are two types of coiling on the basis of plane of coiling planispiral helicoidal planispiral coiling horizontal coiling helicoidal coiling vertical coiling planispiral example होची planar base helicoidal तुम जे कोनसे example नहीं other than planar base then आसीबो तुमरा direction of coiling sinistral dextral sinistral होची anticlockwise coiling by left handed dextral होची right hand by clockwise coiling sinistral example paisa and planar base dextral तुम जा नहीं परियो म्यूरेक्स पोलुटा पैटेला जान नेक्स्ट आसीबो तुमरा coiling बेले तुमरा फ्यूज्ड होंती coil गुरा produces central axis that is called columella ताको कहा जाए imperforated form if they are not fused together they produce an empty space that is called as cavity that is called as umbilicus the cell is called as perforated then तुमरा cell form आसीबो so discoidal is your planispiral coiling
देन आसीबो टर्बिनेट ट्रोचिफॉर्म रे टर्बिनेट रे बोथ acute बा शार्प acute स्पायर आसीबो फ्लैट बेस हेले ट्रोचस कन्वेक्स बेस हेले टर्बिनेट टुरिडेट इज योर वेरी लॉन्ग स्पायर स्टेप लाइक स्पायर इज एग्जांपल टुरिटेला सिलिंड्रिकल हेले मोर कांस्टेंट डायमीटर आसीबो फॉर सम टाइम्स फास्ट मोर इंक्रीज करो देन कांस्टेंट रहइबो एग्जांपल होची सिलिंड्रिकल ला भोलुटा पिपुला तापर आसीबो तुमरा ग्लोबुलर फॉर्म जोतरे की इंपोर्टेंट होची वेरी स्पॉट स्पायर आसीबो वेरी लार्ज बॉडी होल आसीबो एंड राउंडेड अपर्चर आसीबो एग्जांपल होची नाटिका तापर तुमरा फ्यूजिफॉर्म आसीबो जोटा की सिलिंड्रिकल शेप रे आसीबो एग्जांपल होची फ्यूजिनस और म्यूरेक्स तापर कन्वोल्यूट फॉर्म आसीबो जोतरे की ऑल द होल लास्ट होल कवर्ड ऑल द होल like a crenulated leaf तापर ऑरिफॉर्म आसीबो ईयर लाइक शेप आसीबो ता माने वेरी लार्ज अपर्चर आरो तर एग्जांपल होची हैलोटिस इट इज आल्सो कॉल्ड एज रॉक क्लिंचर तापर इंपोर्टेंट आ गोटे आसीबो कोनिकल जोटे की पैरेलल लिप्स आसीबो कोनिकल शेप रहिसबो पैरेलल लिप्स आसीबो ताको कहंती कोन कोनिकल फॉर्म एग्जांपल होची कोनस देन पाटेलिफॉर्म इट इज कैप लाइक आसीबो एग्जांपल पाटेला वर्मिफॉर्म आसीबो वर्म लाइक ट्विस्टेड हेति तापर पपाया फॉर्म आसीबो एग्जांपल होची प्यूपा जोतरे की तार बिटे कांस्टेंट डायमीटर थवा राउंडेड अपर्चर so next comes to cephalopod it is another class under mollusca so first thing these are exclusively marine they are exclusively marine animal like more brachiopod so cephalon देखो ताचो तुमरो cephalon means होची head and podos means foot so the head that comes out from the foot hochi that comes out from the head so cephalopoda jehetu tar head present hochi it is called as the most intelligent mollusca so cephalopod ro eye is present thai cephalopod kon thai eye is present thai तो cephalopod form exist in both exoskeletal form and endoskeletal form आम जो पढ़ुनी जी पढ़ले आप तो ब्राचियोपोड हो कि पेलिसपोड हो गैस्ट्रोपोड हो सब जगह होचंदी कोन एक्सोस्केलेटल सब जगह कोन एक्सोस्केलेटल बियर एंडोस्केलेटल हमर कोन स्केलेटन भीतर अछि फ्लेश बाहर अछि तुम सेफालोपोड रो बहुत फॉर्म तुम पाइबो एक्सोस्केलेटल पाइबो एंडोस्केलेटल पाइबो तो जते भी तुमर एक्सोस्केलेटल फॉर्म अछि सब जगह एक्सटेंड कर जाय एक्सेप्ट होची कोना एक्सेप्ट तुम नॉटिलस सब जगह एक्सटेंड कर जाय छै ऑलरेडी कोटे प्रेजेंट लिविंग तुमरो एक्सोस्केलेटल स्केल एक्सोस्केलेटल सेफालोपोड होची नॉटिलस अदर जहां भैया तुमरो ऑक्टोपस पाउचो एडा छ कोन सेफालोपोड स्क्विड्स होटे सेफालोपोड सब होचंती एंडोस्केलेटल देन कम्स टू तुम सेल मॉर्फोलॉजी तार लाइक तुमरो गैस्ट्रोपोड इट इज आल्सो कॉइल्ड फॉर्म इट हैज बोथ कॉइल्ड एंड अनकॉइल्ड फॉर्म गैस्ट्रोपोड को सब जगह कॉइल फॉर्म थाए आर बोथ कॉइल्ड फॉर्म थिबो अनकॉइल्ड फॉर्म थिबो माने स्ट्रेट सेल थाए कॉइल्ड सेल थाए द सेल ऑफ द सेफालोपोड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ब्रॉडली तुमे दीटा पर डिवाइड कर परिबो गुटो होची बॉडी चैम्बर नडोची फ्रैग्मोपोड तो ये तुम बॉडी चैम्बर है ऑल अदर तुम कंबाइंडली कह फ्रैग्मोपोड जोटी सेठी स्पायर कहउतलो बॉडी होल कहउतलो तो इट हैज आल्सो वन एंड ओपन तो ओपन एंड होची इटा जोटा को अपर्चर कहबो बा एंटीरियर साइड कहबो एंड दिस इज योर क्लोज एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉन्च और पोस्टीरियर साइड देन मोर जो अपर्चर अछि तादर गोटे डिप्रेशन थाए ताको कहते हाइपोनोमिक साइनस हाइपोनोमिक
So जोटा hyponymic sinus side is called as your ventral side, the opposite side is called as your dorsal side. So body chamber रे तुमर organism living material जति रहे and जति कि फ्रैग्मोकोन अछंती they are further class तुमर divided into number of chambers. So all chambers are called as air chamber. तो कौन कहते air chamber कहते. So the fragmocone divided into chambers by a structure called as septum. सेप्टम. तो जो फ्रैग्मोकोन पार्ट रहेला they are divided into multiple chambers by septum. All chambers in the fragmocone they are filled with air, that's why they are called as air chamber. तो सेप्टा देखी तुम्हारा गोटे कैनाल पास करता है, दैट इज कॉल्ड जो सिफंकल कैनाल. तो कौन कहते हैं so canal that traverse the septum the कोन सिफोनल कैनाल. तो एडी तुमरो सिफोनल कैनाल स्ट्रेट सेल अछि, एडी कॉइल सेल अछि. तो सिफोनल कैनाल जोटा अछि it may pass the center of the cell or may pass the margin of the cell. Center of the cell जाय पारे नहले margin of the cell जाय पारे. जदि passes to the center of the cell ताको नॉटिलॉइडिया टाइप कोनती बा नॉटिलस रे तुमरो सेंटर ऑफ द सेल जाय. अमोनॉइड टाइप जोटा दैट फाउंड अलोंग द मार्जिन तुमरो अमोनॉइड्स. देन तुम्हारा सेप्टम जोटी मीट करे सिफोनल कैनाल सॉरी साइफंकल को, दैट इज कॉल्ड योर सेप्टल नेक. त कोन कहते सेप्टल नेक. सेप्टल नेक देखो इट मे प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द प्रोटोकॉन्च और इट मे प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द अपर्चर. प्रोटोकॉन्च को तुम्हारा प्रोजेक्ट कर पारे नहले अपर्चर को प्रोजेक्ट कर पारे. तो जी प्रोटोकॉन्च को प्रोजेक्ट करती ताको कहजा रेट्रोसिफोनेट. कोन कहते रेट्रोसिफोनेट. यदि अपर्चर को करती ताको कहती प्रोसिफोनेट. गोटे रेट्रोसिफोनेट और गोटे प्रोसिफोनेट. तो सेप्टल नेक रो प्रोजेक्टिंग अनुसार तो सेप्टल नेक मे प्रोजेक्ट टुवर्ड्स अपर्चर मे प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द प्रोटोकॉन्च. प्रोटोकॉन्च काडू करले ताको कहती रेट्रोसिफोनेट, अपर्चर काडू करले ताको कहती प्रोसिफोनेट. तापरे जो सेप्टल तुमर जो अपरे सॉरी सेप्टम अछि, सेप्टम पुनी एक्सटर्नल सेल को मीट करंत मीट अलोंग लाइन दैट इज कॉल्ड योर सुचर लाइन. कोन कहत सुचर लाइन. तो एटा देखा ये जो एटा होची कि सेप्टम एरा होची तुम्हारा कैनाल टा. तो से प्रोजेक्ट करछ जानि पछ केमती. तो जो सेप्टम अछि से एक्सटर्नल सेल को मीट करे ऑन ए लाइन दैट इज कॉल्ड योर सुचर लाइन, which is very important in case of cephalopod. तो सुचर लाइन डिफरेंट शेप अछि. मोर ऑर्थोसेराटिक के छिवो नॉटिलॉइड गोनेटेड रेटेड अमोनेट. देखो ये सब डिफरेंट शेप रास्ची है ना. पूरा स्ट्रेट थिले ताको कहते कोन ऑर्थोसेराटाइट. कोन ऑर्थोसेराटाइट एग्जांपल ऑर्थोसेरास. सो पूरा स्ट्रेट थिले ताको ऑर्थोसेरास. जदि तुमरा इनती फोल्डेड बाथिबा ताको कोनती कोन नॉटिलॉइड. नॉटिलॉइड जदि एमती थाए एटा को तुम कोनती सैडल, एटा कोनती लोब. ठीक अछि. तो राउंडेड सैडल राउंडेड लोब थी. तापर गोनेटाइट रे आसी जीव तुम देखा एमती आसी राउंडेड सैडल एंगुलर लोब. तापर आसीबो सेराटाइट रे राउंडेड सैडल फाइनली डिवाइडेड लोब. सेराटाइट रे आसीबो. एग्जांपल सब तुम गोनेटाइट रे गोनेटेटिक रो गोनेटाइट, सेराटेटिक रो सेराटाइट हैला. तापर अमोनॉइट रे आसीबो फाइनली डिवाइडेड लोब एंड सैडल. ये गोटे लीफ लाइक अपीयरेंस आसे. कोन कर लीफ लाइक अपीयरेंस. तो चारटा आला गोटे ऑर्थोसेराटाइट, नॉटिलॉइड, गोनेटाइट, सेराटाइट, अमोनॉइड. तो ओएनजीसी बोली मन रखियो. ओएनजीसी ए ऑर्थोसेराटाइट, नॉटिलॉइड, गोनेटाइट, सेराटाइट, अमोनॉइड. ऑर्थोसेराटाइट रे पूरा स्ट्रेट आसीबो. तापर नॉटिलॉइड रे
फोल्डेड टाइप रे आसीबो कर्व आसीबो फोल्डेड टाइप रे परे तुमरो एंगुलर लोब आसीबो फाइनली डिवाइडेड लोब आसीबो तारे बोथ तुमरो डिवाइडेड आसीबो रहला तुमरो सुचर लाइन अबे कॉइलिंग सेमति तुमरो दिटा टाइप रे कॉइलिंग करि परिबो हेलिकोइडल प्लानिस्पाइरल कॉइलिंग जोटी की वर्टिकल प्लेन रे कॉइलिंग होची आ हॉरिजॉन्टल प्लेन रे कॉइलिंग होची इन केस ऑफ तुमरो सेफालोपोड मोस्ट आर कोन हॉरिजॉन्टल कॉइलिंग खाली गोटे तुमरो राखी टूरी लाइट्स जोटा की हेलिकोइडल कॉइलिंग देखाय देन तुमरो सेल मे बी स्ट्रेट हे पारे स्लाइटली कर्व हे पारे कॉइल्ड हे पारे तुमरो पूरा स्ट्रेट हेतिबो साइडली कॉइल्ड स्लाइटली कर्व हेतिबो नले कंप्लीटली कॉइल्ड हेतिबो तो जदी स्ट्रेट तार एग्जांपल होची बेलेमेनाइट और ऑर्थोसेरास स्लाइटली कर्व हेले तार एग्जांपल साइट्रोसेरास कॉइल्ड तार एग्जांपल होची गोनियाटाइट तो डिफरेंट सेल टाइप्स सेल तुमरो ऑर्थोसेरा कोन आसीबो जोटी की सेल इज स्ट्रेट जोटा में पढले कोन ऑर्थोसेरास आउ बैक्टेरियस आसीबो बेलेमेनाइट आसीबो सेल स्ट्रेट बेलेमेनाइट्स को हम सिगार सेल कहंती देन साइट्रोकोराकोन सेल इज साइडली कर्व एग्जांपल साइट्रोसेरास गायरोसेराकोन सेल इज लूजली कॉइल्ड एग्जांपल होची गायरोसेरास जोत्री की द होल्स विल नॉट टच ईच अदर देन टार्पिसेराकोन सेल shows complete coiling holes in contact with each other example is tarpiceras then involuntary only the body hole will visible example nautilus au ammonites trochoceracon रे मोर हेलिकोइडल कॉइलिंग देखियो तब ल्यूटिटिकोन बैकुलिटिकोन एटा होची पार्टली कॉइल्ड थिबे एग्जांपल यूटिलाइट्स बैकलाइट्स अब बेबीकोन रे सेल इज शॉर्ट कोनिकल एंड कैप लाइक मतलब बेबीसेरास तो तीनटा फॉर्म तुमर देखो एटी थ्री डायरेक्शनल टर्म यूज एपिकार्ड होची डायरेक्शन टुवर्ड्स द अपेक्स प्रोटोकॉन्स को डिस्टार्ड होची डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेरिफेरी away from the axis and centered होची डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल तीनटा टर्म यूज करो so cephalopod tomorrow phylum hochi mollusca class cephalopod which is exclusively marine both endoskeletal exoskeletal form asibo the endoskeletal only nautilus is present now exoskeletal only nautilus is tomorrow living form और तो सब extend है then tomorrow coil एटी coil cell पाइबो straight cell पाइबो curve cell पाइबो ठीक है तो एटा को it is the most intelligent cephalopod because our head present achi our eyes bhi present achi so cell hoji coiled one side open one side closed side is protocons as usual in case of gastropod it open hoji aperture आर दीटा पार्ट होची फ्रैग्मोकोन कोचो गोटे बॉडी चैम्बर कोचो गोटे फ्रैग्मोकोन पुनी फर्दर डिवाइड हेची फर्दर ट्रांस चैम्बर को जोडो एयर चैम्बर कोचो बाय सेप्टम तो ये तुमर एयर चैम्बर जो सेप्टम अछि सेप्टम आर ट्रैवर्स बाय लाइन बाय कैनल कॉल्ड कोन सिफंकल कैनल होची इन केस ऑफ गैस्ट्रो एना होची साइफंकल कैनल मे बी सेंटर दे जाय पारे नहले मार्जिन दे जाय पारे सेंटर रे गले ताको नॉटिलस कोचो मार्जिन रे गले अमोनॉइड कोचो देन सेप्टल लेक होची जोटी सिफंकल आउ सेप्टम मीट करंती सेप्टल लेक होची मे प्रोजेक्ट वर्स ता प्रोटोकॉन्स ओका में रेट्रोसिपनेट कोंती मे प्रोजेक्ट वर्स ता अपर्चर जोडो का में प्रोसिपनेट होची देन मोर फ्यूचर जो सेप्टम अछि मार्जिन को जो जान करे ताको कोंती को फ्यूचर लाइन तुमर 5 टाइप्स ऑफ अछि ऑर्थोसेराटाइड नॉटिलॉइड ओएनजीसी हेला नॉटिलॉइड गोनिटिटिक सेरेटिटिक अमोनॉइड ऑर्थोसेराटाइड स्ट्रेट थिबो गोनिटाइड कोन कर्व थियो राउंडेड राउंडेड लो तापरे सैडल फाइनली डिवाइड राउंडेड सैडल एंगुलर लो गोनिटिटिक सेरेटिटिक हो जे राउंडेड सैडल फाइनली डिवाइडेड लो देन अमोनॉइड बोथ सैडल एंड लोब आर फाइनली डिवाइडेड तुमर तापर कॉइलिंग तुमर सेम आसी आज गैस्ट्रोपोड से हेलिकोइडल प्लानिस्पाइरल एग्जांपल खाली मन रखो हेलिकोइडल होची टूटिलाइट्स सेमति मोर एटी आसु सिनिस्टल डेक्स्ट्रल भी तुम कहि परिबो तापरे डेक्स्ट्रल सिनिस्टल तुमर टूटिलाइट्स आसीबो तापरे तुमर आसीबो तुमर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फॉर्म बाकी स्ट्रेट सेल आसीबो कर्व सेल आसीबो नहले कॉइलिंग सेल आसीबो स्ट्रेट सेल इज ऑर्थोसेरास साइट्रोसेरास होची स्लाइटली कर्व आसीबो साइट्रोसेराकोन गायरोसेराकोन ने गायरोसेरास आसीबो ओटा की लूजली कॉइल थिबो तापर टाइटली कॉइल हेले टार्पिसेरास आसीबो बॉडी होल ओनली विजिबल हेले नॉटिलस अमोनॉइड आसीबो ट्रोचोसेरास कोन आसीले कोन आसीबो हेलिकोइडल कॉइलिंग ट्रोचोसेरास और टूरिलाइट्स आसीबो ल्यूटिटिकोन पार्शियली कॉइल्ड आसीबो बेबीकोन कैप लाइक आसीबो तो एतिकला तुमरा सेफालोपोड so next होची फाइलम एकाइनोडर्माटा मीन्स spiny skin
तांडा हम पढ़िबा क्लास एकिनोइडिया व्हिच इज एक्सक्लूसिवली मराइन बॉटम ड्वेलिंग तुमर पेंटा रेडियल सिमेट्री देखाय जोटा स्पेशली इरेगुलर फॉर्म जोड़ा थांती प्रिमिटिव फॉर्म तुमर कोन पेंटा रेडियल सिमेट्री देखंते नल केते फॉर्म बायलैटरल सिमेट्री भी शो करते शो द सेल ऑफ द एकिनोइडिया इज कॉल्ड एज योर टेस्ट हम टेस्ट बोली कह जाए तो यार बोथ एंड ओपन था बोथ एंड ओपन था गोटे एंड को आम कहती आबोराल पोल आउ गोटे कहती ओराल पोल ओराल को तुम्हें माउथ कौच तुम्हें आनस कौच सो ये भी तुम अदर ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट थाए जोटा कि आबोराल पोल को तुम्हें डोर्सल साइड कौच एंड ओराल पोल को वेंट्रल पोल कौच देन ऑन द बेसिस ऑफ तुम मैटरपरी प्लेट तुम पोस्टर एंटर डिफाइन कर देखिए मैटरपरी प्लेट सो आबोराल पोल होची तुम्हारा आनस पार्ट ओराल पोल होची माउथ पार्ट एंड द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज एम्बिटस तुम्हारा मैक्सिमम डायमीटर ए जगह रहउची ताको एम्बिटस बोली कहते सो जो ओराल पोल होची आबोराल पोल होची ओराल पोल इज कवर्ड बाय a calcareous plate called peristome and आबोराल पोल इज कवर्ड बाय calcareous plate periprot तो सेल फॉर्म अछि दीटा टाइप रो अछि गुटे होची रेगुलर इकिनोइडिया रेगुलर गोटे इरेगुलर गोटे गोटे केस तुम माउथ आउ आनस सेंट्रली प्लेस था दैट इज कॉल्ड जो रेगुलर इकिनोइडिया जदि माउथ एंड आनस नॉट सेंट्रली प्लेस ता कहते इरेगुलर इकिनोइडिया सो मोर ओराल पोल आबोराल पोल होला ओराल पोल को कवर कर पेरिस्टोम आबोराल को कर पेरिप्रोक्ट ठीक अच्छे कौन पेरिप्रोक्ट तो जो पेरिप्रोक्ट अच्छी इट कंसिस्ट ऑफ 10 calcareous plate पेरिप्रोक्ट कंसिस्ट ऑफ 10 calcareous plate तदरु 5 हम कहते जेनिटल प्लेट 5 हम कहते ऑकुलर प्लेट 5 जेनिटल प्लेट 5 ऑकुलर प्लेट तो जो जेनिटल प्लेट था से माने हेक्सागोनल शेप रही था ऑकुलर प्लेट होची ट्रायंगुलर शेप रही था सो जोटा जेनिटल प्लेट अछंती सो जेनिटल प्लेट्स आर हैविंग ए परफोरेशन कॉल्ड ता कोनती जेनिटल डक्ट एंड ऑकुलर प्लेट आल्सो हैव एन परफोरेशन दैट इज कॉल्ड एज ऑकुलर परफोरेशन तो आर सेबल एक्सोनल आर परफोरेशन अछि जेनिटल डक्ट पाजे ठीक अछि आ आर शेप होची ट्रायंगुलर आर जो परफोरेशन था ता कोनती ऑकुलर परफोरेशन सो इट जो जेनिटल डक्ट था दैट सर्व एज अ रिप्रोडक्टिव डक्ट तो जो जेनिटल प्लेट जते थांती तादर गोटे जेनिटल प्लेट थाए जहार न्यूमरस पोर्स थाए ताको कहते मैटरपोरिक प्लेट कोन कहते मैटरपोरिक प्लेट तो मैटरपोरिक प्लेट तुम जो साइड थाए दैट साइड इज कॉल्ड एज योर एंटीरियर साइड The side immediate left to the metaphory plate is called as your anterior side and the opposite side is called as your posterior side. Metaphory left side कुछ कौन anterior side तार opposite side होची posterior side. So la 5 ocular plate 5 genital plate hexagonal ocular plate होची triangular genital plate रे जो perforation था genital duct ऑकुलर प्लेट जो परफोरेशन है ऑकुलर परफोरेशन तो जेनिटल प्लेट रो गोटे प्लेट एट न्यूमरस परफोरेशन तब कह जाए मैटरपोरिक प्लेट तो जो 10 calcareous प्लेट थांती दे अरेंज्ड इन टू डिफरेंट सिस्टम तो हमें जो 10टा प्लेट को हम एपिकल डिस्क भी कहि परिबा सो एपिकल डिस्क में प्रोड्यूस ए कंटीन्यूअस रिंग लाइक तो एंती पूरा 10टा को कंटीन्यूअसली रिंग वाला थिबे नहले तुमरो 5 भीतर थिबो 5 बाहर थिबो हला यदि कंटीन्यूअस रिंग प्रोड्यूस करन ताको इंसर्ट कंडीशन कहंती बा एंडोसाइक्लिक कंडीशन कहंती यदि 5 इनर जेनिटल प्लेट रहला 5 आउटर ऑकुलर प्लेट रहला से केस से ताको कहंती एक्सॉर्ट कंडीशन तो एतले इनर जेनिटल प्लेट रहउची जेतले तुमर एक्सॉर्ट कंडीशन रहउची जेतले इनर पार्ट रे कोन रहउची इनर को जेनिटल प्लेट रहबा आउटर को ऑकुलर प्लेट रहबा तो कंटीन्यूअस कंडीशन रे कोन थाए तुमने माने को पेरिप्रोक्ट को कवर कर रही थांते पेरिप्रोक्ट कोन करते कवर कर रही थांती तो ऑल द 10 प्लेट्स विल टच द पेरिप्रोक्ट in case of tomorrow exert condition only the genital plate touch the periproct तो insert condition
all 10 plates form a continuous closed ring जोथरे कि ocular plates and dental plates both structures the periprocte एडी एपिकल टिश्यू जे सिमेट्रिकल आसीबो जोटा मोस्टली पाइलोजिक रे पाइबो जोटा कि रेगुलर एक्टिनिडिया कहै जाय बा को हम कोन करते एंडोसाइक्लिक कंडीशन इन केस ऑफ एक्सॉट इट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइक्लिक कंडीशन जोटा ocular plate outside था dental plate inside था dental plate only touches the periprocte एटा asymmetrical आसीबो irregular echinodea कह जाय मोस्टली मेसोजोइक echinodea से तुम्हें पाइबो होछ कोन exocyclic condition. Then we took two plane of reference. We took two plane of imaginary plane of reference. One is called as metropory plate. Any plane passing through the metropory plate is called as metropory plane, and all others plane are called as your Lobens plane. Next is tomorrow corona. Corona which is region between the aboral pole and oral pole. Oral pole and aboral pole भितर जो region है ताको बोलते corona. So corona also covered by calcareous plate. The two types of plate you'll find. One which is ambulacral plate and also interambulacral plate. What होची ambulacral plate, what होची interambulacral plate. There are 5 double column of ambulacral plate and 5 double column of interambulacral plate. तो ये देखो So there are two columns. These are called as your interambulacral plate, or the smaller one called as your ambulacral plate. So ambulacral plate, there are 5 double column of तुम्हें पाइबो 5 double column of ambulacral plate जोटा कि smaller थाए, numerous थाए, and ambulacral plates that terminate against the ocular plate. Ambulacral को terminate करे, ocular plate terminate करे. Smaller numerous थाए, तो ambulacral plate रे perforation कोड थाए. So ambulacral plate has a perforation तब कौन दी gemellar pore. Interambulacral plate doesn't have any perforation. तो कौन सी perforation न था. So बोला तुम्हारा 5 gentle plate, sorry 5 double column of ambulacral plate, 5 double column of interambulacral plate. Ambulacral plate terminate against the ocular plate, interambulacral terminate against the gentle plate. Then the two ambulacral and interambulacral plate, they are separated by these lines. So separation अच्छी थी, बचना नहीं. So those lines are called as your adradial line. तो कौन होते? Adradial line. And similar plate जोड़ा आते. Ambulacral हो, interambulacral हो, they are called as paradial line. तो जो paradial सेटा zigzag line था, जो adradial सेटा straight line था. Then तुम्हारा नेमिंग करा जाए. तो जो नेमिंग करा जाए तुम्हारा ambulacral plate, interambulacral plate that terminate against the metropory plate, that is numbered as 2. So जो तुम्हारा interambulacral plate टा genital plate से terminate होतो हो, जोटा कि metropory ही तो ताको हमें number 2 दबा. Then we will move in the anti-clockwise direction. The next interambulacral plate in the anti-clockwise direction will be named as 3. Then 3 तापर 4 5 एम चलियो. तापर interambulacral plate को नेमिंग कला परे तारा anti-clockwise direction रे जोटा next ambulacral plate थो ताको रोमानिक थर्ड दिया हबा. Then तुम्हें से अनुसार anti-clockwise move करियो. Third IV V1 2. Understood? तो डाउ चे नेमिंग ऑफ द तुम्हारा coronal plates तक कौन coronal plates. Next comes to तुम्हारा geminal pores. तो geminal pores जो present है, the different types. और single row रे थांती, double row रे थांती, triple row रे थांती से अनुसार तंगो uniserial, biserial, triserial, tetraserial एमती पाज. यदि single row रहेला uniserial, double row रहेला biserial, तीनटा row रहेला triserial. Then तुम्हारे types of coronal plates. The two types of coronal plates, one is simple plate, one is compound plate. So simple plate consists of a single piece. A compound plate consists of 3 pieces. One is the demi, primary, occultate. तो simple plate example तुम्हें sideris पाइबो. और compound plate example होची
माइक्रोस्टर फाइमोसोमा एगुरा सब सो सेल रो शेप थाए टोटल दीटा टाइप रो तुम कहबो जो पेटालॉइड्स और सब पेटालॉइड्स यदि तुमर एम्बुलेक्रल प्लेट्स आर पेटल लाइक और फ्लावर लाइक पैटर्न थिबे जोटा कि आल्सो एन ऑर्नामेंटेशन फीचर ताको हम कहंती पेटालॉइड्स यदि इरेगुलर थिबो ताले तुमर यदि अदर शेप रो थिबो पाखा पाखी तुमर सब पेटालॉइड बोली तुम कहबो so in some ambulacral plates forms petal or flower like patterns on the arboreal surface such petal shape arrangement is called as petaloid or subpetaloid. Then ornamental feature I would say spines or tubercles. Spines तुम्हारा long तुम्हारा spine भला थिबो और tubercles होची button भला थिबो है ना तो coronal plates से spine tubercles थोड़ा cover करते टेस्ट को spines are large and movable in case of तुम्हारा sidaris irregular smiles are spines are small and fine जोटा कि adapted for burrowing and locomotive condition. तो जो स्पाइन्स और ट्यूबरकुल्स थाए तांकर पार्ट्स अछि स्पाइन रे 3 पार्ट पाइबो गोटे हेड कोलर स्टेम और ट्यूबरकुल्स तुम 3टा पार्ट पाइबो मामेलोन बॉस ऑरियोल तब अनदर ऑर्नामेंटेशन फीचर थाए जोटा कि फैसियोल प्रोड्यूस हुए जोटा कि प्रोड्यूस हुए बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ऑफ ट्यूबरकुल्स एंड स्पाइन्स सो दीटा टाइप रो गोटे पेरिपेटलस आ गोटे एनाल फैसियोल सराउंडिंग द एनस एंड तुम यदि कोरोनल रीजन ने पाइबो ताको कहंती कोरोनल फैसियोल. दीटा टाइप रो पेरिपेटलस जोटा कि एनसाकर द पेटालॉइड एरिया हेमिस्टर और एनाल फैसियोल अराउंड द एनस को जोटा माइक्रोस्टर आसी तापर अनदर इंपोर्टेंट फीचर होची तुमरो एरिस्टोटल एंटेन जोटा कि टीथ अरेंजमेंट ऑफ द सेफाला जो एक्टिनॉइड तो टीथ अरेंजमेंट मोरो एरिस्टोटल एंटेन शेप रो थाए जोटा कि इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट फीचर ऑफ तुमरो रेगुलर एक्टिनॉइड है ना खाली रेगुलर मिले इरेगुलर रे मिले सो देखो ये जो शेप टा अछि दिस शेप इज एरिस्टोटल एंटेन तो जो टीथ अरेंजमेंट ताको आ जाए एरिस्टोटल एंटेन अरेंजमेंट तापर तुम्हारा डिस्टिंक्शन बिटवीन इरेगुलर एक्टिनॉइड एंड रेगुलर एंड इरेगुलर इज वेरी इंपोर्टेंट तो रेगुलर एक्टिनॉइड रे तुम्हारा शेप ऑफ द टेस्ट को ना स्फेरिकल और ग्लोबुलर थिबो एटा होजी हार्ट शेप रो और ओवल शेप रो सिमेट्री ये मेरा सिमेट्री देखा रेगुलर या इरेगुलर कोन बायलैटरल सिमेट्री देखा पोजीशन ऑफ माउथ होची बोथ सेंट्रल थिबो एटा माउथ exterior anterior to or posterior to the anus thibo then apical disc eti symmetrical by inserted condition thibo eti asymmetrical exerted condition thibo corona large and well developed small and reduced thibo tubercle sign both primary secondary thibo only secondary ba small tubercles thibo kothre irregular re aristotle enter present in regularia absent in irregularia fascioles absent in regularia मोड ऑफ लाइफ एटी तुम मोस्टली एपिफोनाल थांती होची रेगुलरिया इनफोनाल थिबे इरेगुलरिया एग्जांपल तुम सिडारिस एकिनस माइक्रोस्टर हेमिस्टर होचंदी इरेगुलर हला तुमरा एकिनॉइड तुम एकिनॉइड रे हेले तो फाइलम होची एकिनोडर्माटा क्लास होची एकिनॉइड तो देखि बॉटम डवेलिंग एंड एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल तो टेस्ट इज तुमरा सेल इज कोला जो टेस्ट both end open mouth anus mouth is called as oral end which is the ventral side and oral anus is which arboreal pool it is dorsal side symmetrical तुम irregular irregular थांती यदि along an axis mouth और anus present थिबे ताले regular यदि along न थान ताले irregular then the arboreal pool the anus they are surrounded by periproct and oral pole they are surrounded by peristome. So periproct consists of 10 plates, 5 ocular plate, 5 gentle plate. So gentle plate shape होची hexagonal. Shape होची कौन? Hexagonal. So it has a perforation called genital duct. Genital duct. One of the gentle plate have numerous perforation that was a madreporic plate. Then ocular plate it has triangular shape or pentagonal shape तुम पाइबो it has one perforation that is called as your ocular perforation
देन जो अरेंजमेंट थाए तीटा टाइप रो थाए गोटे इंसर्ट कंडीशन गोटे एक्सर्ट कंडीशन इंसर्ट कंडीशन रे ऑल 10 प्लेट्स फॉर्म ए कंटीन्यूअस रिंग और एक्सर्ट कंडीशन रे 5 इनर जेनिटल प्लेट 5 आउटर ऑकुलर प्लेट ठीक अछि तो इंसर्ट कंडीशन होची सिमेट्रिकल कंडीशन जोड़ा आछो को टाइप ऑफ रे रेगुलर रे आछो कि पैलियोजोइक रे आछो इरेगुलर रे तुमरो एसिमेट्रिक कंडीशन आछिबो जो देखि मेसोजोइक रे आछिबो तो एटा को जोटा कि इंसर्ट कंडीशन जोटा आछुची दैट इज कॉल्ड योर एंडोसाइक्लिक एटा होची एक्सोसाइक्लिक होची इरेगुलर then a plane passing through the metamorphic plane a plane passing through the other plane that is called Loven's plane then I saw coronal plates corona is the region between oval and oral plate coronal plates which there are two types of coronal plate ambulacral plate intraambulacral plate ambulacral plate small numerous intraambulacral plate large ambulacral plate what a pore space tha that called the geminal pore there are you can say 20 column of coronal plates 5 double column of intraambulacral plate 5 double column of ambulacral plate so the ambulacral and intraambulacral separated by adradial line and each plate similar plate separated by zigzag line called paradial line so ambulacral plate that terminate against the ocular plate intraambulacral plate terminate against the genital plate ambulacral plate has a perforation that is called germinal pore intraambulacral plate does not have any perforation then the naming of the plate the intraambulacral plate that touches the metamorphic plate will number as 2 then will move in the anticlockwise direction to number the intraambulacral plate then the ambulacral plate in the anticlockwise direction next to the number 2 is Romanic third then in anticlockwise direction then तम जो geminal pore अछि मे बी सिंगल रो रे थाए डबल रो रे थाए से अनुसार यूनिसेरियल बाइसेरियल ट्राइसेरियल तुम कंसीडर करिवो देन जो कोरोनल प्लेट से तीन टाइप रे सिंपल और कंपाउंड सिंपल प्लेट रे सिंगल पीस थाए कंपाउंड रे 3 पीस थाए डेमी प्राइमरी अकल्टेड देन ऑर्नामेंटल फीचर रे पेटलॉइड और सबपेटलॉइड जोड़ा फ्लावर लाइक अपीयरेंस आसे एंड तुमरो इन अदर ऑर्नामेंटेड फीचर तुमरो ट्यूबरकुल्स और स्पाइन्स आसियो स्पाइन तीन पार्ट था हेड कोलर स्टेम और ट्यूबरकुल्स मामुलर बस ऑरियोल another ornamental feature is fascicle that produced because of crossing of tubercles and spines like गोटे anal fascicle आसीबो जोटा कि सराउंडिंग द anus आ गोटे peripetalous आसीबो then another most important feature होची Aristotle lantern structure जोटा कि unique masticatory by teeth arrangement जोटा कि Aristotle lantern shape रो देखा then this is the difference between irregular and irregular echinoid रेगुलर स्फेरिकल थिबो एटा हार्ट शेप थिबो सिमेट्रिकल एटा पेंटामोनास एटा बायलेटरल एटा तुमरो सिमेट्रिकल मीनिंग होची सेंट्रली प्लेस्ड थिबो एटा देन कोरोनल प्लेट होची लार्ज वेल डेवलप्ड थिबो एटा स्मॉल थिबो अनदर इंपोर्टेंट होची फेशियल एब्सेंट थाए एटी प्रेजेंट थाए अनदर होची कि एरिस्टोटल लैंटन भी आल्सो प्रेजेंट थाए रेगुलर रे एटी एब्सेंट थाए एटी एपिफोनल मोस्टली देखांते रेगुलर रे इरेगुलर रे इनफोनल देखांते एटा तुमरो एकिनोइड दिस कम्स टू क्लास ट्राइलोबाइटा that belongs to phylum Arthropoda. So Arthropoda is the largest phylum. Under a trilobite class, so that it is an extinct form, also exclusively marine, only found in Paleozoic era. Paleozoic era. Trilobites, the name is trilobe. Tinta lobe नहीं किसी so tinta lobe होची one is your axial lobe, another two is your pleural lobe. सो ताको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन रे तीनटा लोब रे डिवीजन करे छी अनुसार ता नेम दिया छी गोटे होची कोन एक्सियल लोब आउट होची प्लूरल लोब आउ दीटा होची प्लूरल लोब देन इट आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ओटा कोआ जाय सेफालन थोरैक्स पिजिडियम सेफालन होची हेड थोरैक्स होची बॉडी पिजिडियम होची टेल देन द डोर्सल पार्ट होची तुमरो बेली पार्ट होबो तुमरो वेंट्रल पार्ट बैक पार्ट हो डोर्सल पार्ट so dorsal part tomorrow covered by calcareous exoskeleton called as carapace then comes to cephalon part is the head part so cephalon it is broadly divided into two parts one is called your glabella another part is called cheeks one is called glabella another is called cheeks so glabellar part it has lobes that is called your glabellar lobe it कौन था लोब था
these are lobes, that's called glabular lobe. They are separated by these lines called glabular furrow. Then all other parts are called as cheeks. So the cheeks are divided into two parts. One is free cheeks, another is fixed cheeks by a structure called facial suture. So this is called as your facial suture. So जोटा फ्री चिक्स थाए ताको कहते फिक्सिजेना, जोटा फिक्स चिक्स थाए सॉरी जोटा फिक्स थाए ताको फिक्सिजेना कहते, जोटा फ्री चिक्स थाए ताको लिब्रिजेना कहते. सॉरी लिब्रिजेना. ऑन द फ्री चिक्स आईज आर प्रेजेंट. फ्री चिक्स रे कौन थाए? आईज प्रेजेंट थाए. तो सम तुमरो ट्राइलोबेट आई प्रेजेंट थाए, सम ब्लाइंड ट्राइलोबेट थाए. जदि भी प्रेजेंट थाए दैट प्रेजेंट ऑन द फ्री चिक्स ताको कहते लिब्रिजेना. सो जो आईज प्रेजेंट थाए, तो आईज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आईज. गोटे होची तुमरा हलोचुरल, सिजोचुरल, आबोथोचुरल. तीनटा टाइप रो तुमरा आईज पाइबो. सो आईज इनका ही तो देखे देने बेटर होगा. So जो eyes present है in case of trilobites, the three types of eyes in पाइबो. गोटे holochoral eye, schizochoral, गोटे abothochoral. तो डिवाइड केन कराई छे. holochoral eyes रे तुमरो जो आई को कवर करे कर्निया, ठीक है. तो holochoral ले there is a single cornea covering all the eyes. और दी holochoral schizochoral देखिबो there are separate cornea for eyes. holochoral रे so single cornea layers cover all lenses, and schizochoral each has separate cornea. Separate cornea थिले ताको schizochoral कहउछो, सिंगल थिले holochoral कहउछो. holochoral ले तुमरा न्यूमरस प्लेट पाइबो, न्यूमरस लेंसेस पाइबो, मोर देन 15000, जोतरे की लेस पाइबो होची कोथरे schizochoral eyes. तांको सेपरेट करिवा पई कोनोसी मसल्स न थाए. तो सॉरी तो एठी तुमरा सेपरेशन पई मसल्स थाए, एठी सेपरेशन पई मसल न थाए, जोटा को स्क्लेरा बोली कहते. तो एटा होची तांकर डिफरेंस. एग्जांपल आर आसिडोफोरस, पिपेटुलिया, सिजोचुरल रा होची तुमारा फाकपोडिया. रिडॉप्स फाकअप्स एगुरा सब आसीओ, जोतरे की तुमारा सेपरेशन पई थाए, हैना. तापर आउट होची आबोथोचुरल आईज, जोतरे की तुमारा बहुत कम लेंसेस थाए, आ सेम आज तुमारा एठी भी तुमारा सेपरेट करनिया थाए. स्क्लेरा थाए ताको सेपरेट करिया को ईच लेंसेस को, एंड ईच लेंसेस आर इंडिविजुअल करनिया बट आर fewer lenses. It is a very rare type of eyes. Example होची तुमारा पाकेटिया. तीनटा टाइप रहला, गोटे holochoral, गोटे schizochoral. holochoral सबटा मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंसेस थाए. ताकर गोटे पर्टिकुलर कर्निया थाए को सब लेंसेस को कवर करंती. किंतु ए दिरा केस रे गोटे holochoral, abothochoral केस रे सेपरेट कर्निया थाए. schizochoral ले तुमारा 700 पका पके लेंस थाए, एतरे लेंस बा फ्यूअर लेंसेस थाए, अप टू 70 लेंसेस थाए. एटाला तुमारा आईज. तापरे आ गोटे भी फीचर रहितला तारे फेशियल सुचर. देखो फेशियल सुचर पूरा डेफिनेशन तार पहले फेशियल सुचर रे जोटा की दैट लाइन डिवाइड द फ्री चिक्स एंड फ्री चिक एंड फिक्स चिक्स. देन तुम्हारे जोटी फेशियल सुचर लाइन से आगो काम अछि दैट ऑन द सेफलन अलोंग विथ द पार्ट्स ऑफ द सेफलन सेपरेट्स ड्यूरिंग मोल्टिंग. मोल्टिंग माने कोन? गोटे लेयर जो एक्सोस्केलेटल लेयर ता से सेपरेट वे बा न्यू डेवलप वे, जोटा कि ओल्ड सेल को से छाड़ी कि न्यू सेल डेवलप करे, ताको कहते कोन? मोल्टिंग बा एक डिसीज प्रोसेस जोटा कि देखाय के ट्राइलोबाइट. तो सेटा जो ब्रेक हुए दैट अलोंग सॉरी जो ब्रेक हुए अलोंग फेशियल सुचर हुए. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हारा फेशियल सुचर. कोडोजी प्रोटोपेरियन, हाइपोपेरियन, है कोडोजी प्रोटोपेरियन, हाइपोपेरियन, ओपिस्टोपेरियन, प्रोपेरियन, गोनाडोपेरियन. ऐसे की टाइप ऑफ फेशियल सुचर. प्रोटोपेरियन, हाइपोपेरियन, दे आर मार्जिनल टू द सेफालिक शिल्ड. तो देखिए आईज कौन था? एब्सेंट था. मुझको दो छोटे प्रोटोपेरियन, हाइपोपेरियन रा ग्लाबेला लेला एवडा थलो. एटा हम कोन थियो फेशियल सुचर. तो एटा होची प्रोटोपेरियन और हाइपोपेरियन रे. प्रोटोपेरियन हाइपोपेरियन रे तुमरो तो फेशियल सुचर इज मार्जिनल टू द सेफालिक शिल्ड, एंड
The eyes are present in case of protoparian, eyes are absent in case of hypoparian. Then ଆସିବ ତୁମର other ତିନିଟା type. Proparian, gonadoparian, opistoparian. So in case of तुम्हारा proparian, the suture that commences from the posterior lateral margin. तो এটা হচ্ছে তোমার anterior side, এটা হচ্ছে posterior side. तो Trilobita head side টা হচ্ছে anterior, tail side টা হচ্ছে posterior. तो anterior posterior side, तो এটা posterior रो lateral margin ରୁ start হচ্ছে end হচ্ছে anterior margin रे proparian. And gonadoparian that start from the genal angle. So this is called as your genal angle. It is जोटी join होचन ता कौन कहते हैं genal angle को. So say it start from the genal angle and ends at the anterior margin. And this opistoparian it start inside the genal angle from the posterior margin. Visual difference कहाँ? तो posterior lateral margin start होची, इधर from the genal angle start होची, इधर inside the genal angle start होची कोड़ा opistoparian. तो inside the genal angle opistoparian, from the genal angle gonadoparian, and posterior lateral margin your proparian. So example मन रखिबो gonadoparian homalonotus, then proparian of Phacops, opistoparian रो होची paradoxide, and hypoparian रो agnostus microdiscus जोटा blind trilobite, और protoparian रो होची olenilus. There are facial feature and all about तुम्हारा cephalon. This comes to तुम्हारा thorax body region. Thorax part होची तुम्हारा main important segmented था. So 2 to 42 number segment में पाइबा, 2 agnostus रे पाइबा, 42 olenilus रे पाइबा. So the thorax part also can be split into three tomorrow longitudinal section. One is axial lobe, one is pleural lobe. So axial lobe is said to the continuation of glabella and pleural lobe is said to the continuation of cheeks. So it is tomorrow important कौन feature आसिबो गोटे होची fulcrum जोटे कि the pleural lobe रे the segment that bend away from the axial lobe that is called your fulcrum. तासा the transverse groove between the thoracic segment आसिबो, thoracic segment भितर जो transverse groove आसे ताको कहते articulating furrow. Pleural furrow होची कि तुम्हारा depression on each side of the pleuron ताको कहते pleural furrow. Longitudinal furrow divide the axial and pleural furrow. Axial और pleural furrow को जे divide करता को कहते longitudinal furrow. जोटा fulcrum कहले at the point at some distance from the axial axis where each pleuron curves. प्लूरल रो जो टर्मिनल एंड थाए सेटा प्लूरल एंगल कहि परिबो नहले प्लूरल स्पाइन कहि परिबो. जो टर्मिनल एंड मे बी सेटा कोन शार्पर हे पारते नहले राउंडेड हे पारते. So this is your axial lobe. Okay, this is your axial lobe and this is pleural lobe. एटा continuation of glabella, एटा continuation of cheeks. तो इट्स हमर रीज पूरा थांती जोटा कि axial furrow बोली कहउछ. तर longitudinal furrow आको डिवाइड करचंती. और एठी जो बेंड होचंती इट इज कॉल्ड एज योर फल्क्रम. तापरे द प्लूरल एंड टाइम द स्पाइन थाई पारे नहले राउंडेड थाई पारे से अनुसार प्लूरल एंगल प्लूरल स्पाइन बोली कहउछ. देन लास्ट मोर आसीबो तुमरो पिजिडियम बा टेल पार्ट. पिजिडियम होची तुमरो पोस्टेरियर मोस्ट लोब होची पिजिडियम को जाय कंपोजिशन ऑफ 3 to 6 few segment. In case of thorax segment थे but they move upon each other, they are not fused but tail ले थोड़ा fused था. So tail होची function आ जाए propeller हिसाब से function करे but direction change करे तुम्हारा help करे and the process of forming of tail is करा जो कौन caudalization and the last part of the pygidium is करा जो telsum. Telsum. तो pygidium और cephalon size अनुसार तुम्हारा division करा है ची trilobites को. गोटे माइक्रोपाइगस गोटे हेट्रोपाइगस आइसोपाइगस मैक्रोपाइगस आपाइगस इनके सब डिवीजन कराई. सो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द टेल एंड सेफालन फर्स्ट सो माइक्रोपाइगस जोटा कि पिजिडियम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सेफालन. एग्जांपल होची पैराडॉक्साइड. देन हेट्रोपाइगस आसीबो पिजिडियम इज रिलेटिवली लार्ज बट स्मॉलर देन द सेफालन. एग्जांपल जो कैलेमिनिया और टाइकोपारिया. देन आइसोपाइगस होची पिजिडियम और सेफालन ऑफ सेम साइज. एग्जांपल आसीबो आइसोटेलस एग्नोस्टस इलेनियस. Then macropygus रे pygidium is larger than the cephalon. For example, I saw anisopyge. Then apygus रे pygidium होचे absent. For example, I saw nevoid. So that तुम्हारा different type of
cell form on the basis of तुम्हारा pygidium and cephalon size. तो ट्राइलोबाइट केस है फेशियल सुचर इज वेरी इंपोर्टेंट. तो ट्राइलोबाइट होची तुमरा एक्सक्लूसिवली मराइन एंड एक्सटिंक्ट जोटा कि ओनली पैलियोजेक रे तक मिलिबो. जोटा कि तीनटा लोब थाए दीटा प्लूरल लोब गोटे एक्सियल लोब. ट्रांसवर्स सेक्शन में तुम तीनटा डिवीजन कर परबो सेफालन pygidium thorax. तो dorsal side of the body covered by calcareous plate that is called as carapace. Then cephalon में दीटा पार्ट था glabella cheeks. Glabular lobe thai, they're separated glabellar farrow. Then cheeks are separated by facial suture to free cheeks and fixed cheeks. Free cheeks are called librigena, fixed cheeks are fixigena. तो free cheeks रे तुम्हारा eyes present है. The eyes the lenses of the eyes are separated by covered by single cornea. It is called holochoral. Separated by if had separated cornea, it is called as sciochoral or abothochoral. Sciochoral ले तुम्हारा 700 पाखा पे lenses था इतने लेस लेंसेस था. देन तुम आसो फेशियल सुचर जोटा मोल्टिंग रे हेल्प करे जोटा कि गोटे प्रोसेस जोटा कि ओल्ड सेल को छाड़ी कि न्यू सेल डेवलप हुए एक्डेसिस करंट प्रोसेस. तापर आसो टाइप्स ऑफ तुमरा फेशियल सुचर जोटा कि प्रोटोपारियन, हाइपोपारियन, प्रोपारियन, ओपिस्टोपारियन, गोनाडोपारियन. तो प्रोटोपारियन रे तुमरा प्रोटोपारियन हाइपोपारियन ने सेफालिक शील को मार्जिनल थिबो होची कि फेशियल सुचर. तो जदि मार्जिनल थो स्पेशल सुचर देयर विल बी नो फ्री चीक्स एंड फिक्स्ड चीक्स. बोले कि प्रोटोपारियन रे आईज प्रेजेंट थाए, हाइपोपारियन रे आईज एब्सेंट थाए. प्रोटोपारियन एग्जांपल ओलेनिनस कोचो, हाइपोपारियन एग्जांपल होची कि आग्नोस्टस माइक्रोडिस्कस. देन आसबो तुमरो प्रोपारियन. प्रोपारियन रे तुमरो फेशियल सुचर स्टार्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर लैटरल मार्जिन टू द एंटीरियर मार्जिन. फॉर एग्जांपल होची पैकअप्स. ओपिस्टोपारियन रे tomorrow it starts from the inside the general angle from the posterior margin to the anterior margin. For example paradox side. Gonadoparian hochi it start from the general angle. Example hochi homalonotus. चला cephalon. तापरे तुम्हारा thorax रे तुम्हारा segmented थाए. movable segment थाए 2 to 14 row segment थाए. 2 होची agnostous, 42 होची olenilus. तार दीटा तीनटा लोब तुम कहि परियो एक्सियल लोब गोटे दीटा प्लूरल लोब. एक्सियल लोब कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रावेला, प्लूरल लोब कंटिन्यूएशन ऑफ चीक्स. प्लूरल लोब is separated by pleural furrows. Then axial lobe separated by axial furrows. Then pleural and axial separated by longitudinal furrows. Then pleural lobe has fulcrum जोटा कि at some distance से bend होची. The pleural lobe tomal angle हे पर जदि rounded थियो, spine हे पर जदि angular थियो बा sharp थियो. Then the तुम्हारा पोस्टेरियर एंड को तुम्हारा pygidium बोली कहा जाए जोटा कि 3 to 6 fused segment थाए. तो pygidium act as a propeller. Formation of pygidium is called as caudalization. Then the anal segment is called as telson. Then according to the size and तुम्हारा size of the cephalon and pygidium तुम्हारा इसको heteropygus कही परियो. अच्छा ठीक है. Micropygus कही परियो. Pygidium is very small. Heteropygus होची unequal size but pygidium is smaller than the cephalon. Pygidium is smaller than the cephalon. Example paradox side एटा होची Calamini, Trichoparia, Ichthyopagus रे same size थांती. Agnostos, Vilanius. Macropygus रे pygidium होची larger than the cephalon. Example होची Anisopyge. तापर यदि the tail is absent it is called as your apygus. Example होची Nebadia. देखा तापर आसीबो फाइलम होची Hemichordata. So Hemichordata means कोन partly तुम्हारा coded characteristics को partly non coded characteristics हो. ता अंडर हमें पढ़िबा क्लास होची ग्राप्टोजोआ व ग्राप्टोलिथिना. कवर ग्राप्टोलिथिना और ग्राप्टोजोआ. और मेन इंपोर्टेंस होची ग्राप्टो मींस होची रिटन, लिथ होची स्टोन रिटन ऑन द स्टोन कोइ परिबो नले ग्राप्टोजोआ जू. ग्राप्टो होची रिटन जू एनिमल रिटन एनिमल्स बोली कहा जाय. इसमें जो फोसिल इंप्रेशन दियंती दे लुक लाइक रिटन ऑन द स्टोन. सेतमे ताको ग्राप्टोलिथिना बोली कहा जाय. सो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट marine colonial organisms like tomorrow coral hocho to colonial evi colonial तो bottom dwelling आसीबो and exclusively marine tomorrow brachiopoda is exclusively marine, cephalopoda la exclusively marine, echinoderma hoche exclusively marine, then it out exclusively marine animal. तो देखिए तारा morphology
So the exoskeleton consists of cup like structure called theca सेगुला तुम थेकम कहि परिबो सेगुला सब कोन थेका सुन थेका एरा भी तुम कहि परबो थेका ठीक है तो वन एंड होची ओपन जोटा को हम अपर्चर बोली कहउछंती अदर होची ओपन टू द ए कॉमन कैनाल एटोटे कॉमन कैनाल अछि कि एटी कॉमन कैनाल अछि ताडको ओपन हेता त गोटे एंड तुमरो जोटा माउथ ओपन था आउटसाइड तको अपर्चर कहै जे आ गोटे ओपन टू द कॉमन कैनाल they are attached to the substrate or rock by rod like branch called stipe एटा को कोन कहछ stipe कोछ माने इथे तुमरा अटैच हे जानती कोन छोटे substratum सहित थेका और स्टाइप टोटल को कोन कहते दिस इज कॉल्ड जो राब्डोसोम कोन कहते राब्डोसोम जो साइड तुमर थेका प्रेजेंट है एटा को वेंट्रल साइड कहते अदर साइड को कोन कहते डोर्सल साइड कहते थेका कहि परबा पॉलीप्रे कहि परबा पॉलीपेरी कहि परबो हला ओरिएंटेशन तुमरो माउथ साइड होची कहते डिस्टल एंड अपोजिट साइड तुमरो प्रोक्सिमल एंड कहते सिकुला होची तुमरो स्मॉल कोनिकल कप एटी जो स्मॉल कोनिकल कप प्रेजेंट अछि ता कोन कहउछन्ते सिकुला एंड तांगर apex extended to thread like tube called nema तापर इटु आउट पर्टिकुलरली थ्रेड लाइक थाए ताको एटा को नेमा बा भिगुला बोली तुम पाइब हला नेमा प्लस तुमरो पेरिट्रम जोडा होची सेटा कोन कहते भिगुला कहते तापर जो राब्डोसोम हैला जोरा कि तुमरो थेकाउ स्टाइप मिसी जो राब्डोसोम कहउछ राब्डोसोम रा अरेंजमेंट अनुसार तुम यूनिसेरियल पाइबो बाइसेरियल पाइबो टेट्रासेरियल पाइबो यूनिसेरियल जो स्टाइप रो गोटे साइड रे थेका थिबो ताको यूनिसेरियल कहंती स्टाइप रो बोथ साइड थले तो कहंती बाइसेरियल चारटा साइड थले टेट्रासेरियल तो यूनिसेरियल रे तुमर एग्जांपल मोनोग्राफ्टस बाइ रे डाई डिप्लोग्राफ्टस आउ टेट्रा रे टेट्राग्राफ्टस तो एग्जांपल मन रखा हिची यदि सिन राब्डोसोम कोन मोर देन वन सीरीज ऑफ थेकम इन राब्डोसोम तो कोन कहते सिन राब्डोसोम केते एंगल से माने डाइवर्स करछन सेटा को एंगल डाइवर्जेंस कहै छै गोटे टाइप रो जो पर्टिकुलर एंगल ले माने डाइवर्स करछन बुझछ आ कोन कोन एंगल ऑफ डाइवर्जेंस समटाइम्स हमारो जो बाइसेरियल थाए दीटा अगर गोटे कॉमन कैनाल थाए एग्जांपल होची रेटियोलाइट्स और टू सेपरेट कैनाल थाए डिवाइड बाय सेप्टम जोटा कि क्लाइमोग्राफ्टस कैन शिफ्ट इनटू टू यूनिसेरियल कॉलोनी जोटा डिफरेंट कॉलम थाए हला कैनाल थाए सेटा दीटा स्प्लिट हे परंत हला टू यूनिसेरियल भी कंबाइंड हे की प्रोड्यूस करे पारे गोटे ता कोंती तार एग्जांपल होची डाइमॉर्फोग्राफ्टस और दीटा सेपरेट हे जिवे डाइकार्नोग्राफ्टस तब these are the different shape of the theca मोर tubular shape आछो hook shape आछो lobate shape आछो leaf like आछो isolated आछो these are different shape of theca this much होची about मोर graptolites मोर मन रखो thecum stipe rhabdosome thecum open है जी गोटे anterior side then other end open to the common canal then मोर rhabdosome uniserial बा जो डिप्लोग्राफ्टस मोनोग्राफ्टस यूनिसेरियल बाइसेरियल टेट्रासेरियल कोच जते कि जते नंबर ऑफ तुमर कोन थिबो थेकम थिबो ऑन द बोथ साइड ऑफ द पूरा स्टाइप थाए गोटे सिंगल स्टाइप थाए बा सिंगल कैनाल थाए नल मल्टीपल कैनाल थांती से अनुसार तुमरा डिफरेंट नेमिंग कराइ छी आ आदर बेसी किसी नै बोलो देखला तुमरा ग्राफ्टोजोआ then comes to phylum hochi Coelenterata so class tadra padeba hochi kon Anthozoa Coelenterata means hochi they have a hollow gastrovascular cavity ene ta na de kon Coelentron or Coelenterata both tomar extent of living form asbi but jo class Anthozoa achi jo hame coral boli konthi they are exclusively marine both free thanti attached thanti so only polyp stage is present medusa shape is absent polyp होची कोन मोरा फ्री स्विमिंग medusa होची attached form then exclusively marine occurring from lower water basin to the present and important thing होची आरो coral रो होची they generally inhabit in warm shallow marine condition up to 200 meter depth
टेम्परेचर रेंज होची 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड आसीबो एंड मोस्टली फाउंड इन मिड लैटिट्यूड रीजन। तो तादरे तुमरो कोरल डेथ हला परे कोनसी जो भी माउंटेन बा जो भी प्लेन रे थांते से तुमरो कोरल रीफ बिल्ड करत जोटा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल रीफ तुम पाउछ कोन अटल पाउछ बैरियर रीफ पाउछ फ्रिंजिंग रीफ पाउछ डिफरेंट टाइप ऑफ रीफ पाउछ जे कोरल रो डेथ रे डेड कोरल स्केलेटल ऑर्गेनिज्म रे प्रोड्यूस हिच। तबरे मॉर्फोलॉजी तुमरो आंथोजोआ कोरल कोनिकल शेप है पर सिलिंड्रिकल शेप है पर आर भी वन एंड ओपन था वन एंड क्लोज था ओपन एंड को हमें एपिकल एंड बोली कोनती। सो वन एंड ओपन था जोटा अबोरल एंड कोनते ओपन एंड हो जो अदर एंड कुछ कोन ओरल एंड कोनते ओरल एंड माउथ था सराउंडेड बाय मोर टेंटाकल्स था अ माउथ लीड्स टू अनदर स्टोमाडियम जोटा को गलेट बोली कह जाए व्हिच ओपन टू द सिलेंड्रम जोटा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को ओपन होता है। देन मोस्ट आंथोजोआ प्रोसेस एक्सोस्केलेटन जोटा मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ताको हम कहते थेका। तो individual skeletal cup is called corallite and the colony of corallites forms corallum। तो जोटा एक्सोस्केलेटन था गोटे सिंगल कोराला ताको कहा जाय कोन कोरालाइट आ कॉलोनी ऑफ कोराल जा एक्सोस्केलेटन था को कोरालाइट बोली कहते तो को सॉरी कोरालम बोली कहते। आउटर वॉल corallite is known as theca। They may have another coating that is called as your epitheca। तो मैं एपिकल एंड भूल कह देली गेटा क्लोज ओपन एंड इज कॉल्ड कैलिक्स है ना जोटा अपर्चर क्लोज एंड इज कॉल्ड एज योर एपिकल एंड। तो एटा तुमरे ओपन रहला एटा क्लोज रहला भीतर रहउछ कोन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी अछि से माने सब they are तुम्हारा divided into chambers by different structures ताकू कहते हमें सेप्टा हो टेबुले हो डिसेप्टमेंट्स हो है ना। तो इंटीरियर ऑफ कोरल डिवाइडेड इनटू प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बाय तुम्हारा सेप्टा टेबुले डिसेप्टमेंट्स। सेप्टा हो सबटू लार्जर जोटा कोन कहते सेप्टा कहते जोटा कि डिवाइड करछे बडा। तो सेप्टा तुम्हारा तीनटा टाइप रा आसीबो सबटू लार्जर जोटा तुम कौच प्राइमरी ताटू जो स्मॉलर जोटा सेकेंडरी ताटू छोटा वाले टर्शियरी जोटा लार्जर सबटू ताको प्राइमरी कह जाए प्रोटोसेप्टा कह जाए और दुटा सेकेंडरी टर्शियरी को मेटासेप्टा बोली कहते एंड सेप्टा आर केप्ट अपार्ट बाय दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड डिसेप्टमेंट्स। सेप्टार शेप अनुसार तुम तीनटा टाइप रो पाइबो गोटे स्ट्रेट कहते एस्टेरॉयड आ गोटे कर्व थाए थर्मास्टरॉयड आ गोटे होची शॉर्ट एंड सेपरेटेड थाए ताको एफरॉयड बोली कहते। ता सहित तुम विल फाइंड डिप्रेशन अलोंग द कैलिक्स कैलिक्स से तुम डिप्रेशन पाइबो ताको कह जाय फोसुला। तो ताको पोजीशन अनुसार तुम कार्डिनल काउंटर लेफ्ट आउ राइट अलर फोसुला बोली कह जाय। तो बेसिस ऑफ देयर तुम पोजीशन तापर शेप तुम एटी किसी बेसी इंपोर्टेंट नहीं खाली मन रखथो कि दीज आर डिफरेंट शेप्स आर फाउंड इन केस ऑफ कोरल न मन रखले चलो एटा तुम इंपोर्टेंट जिनस आसीबो एटी कोरल रे डिफरेंट कोरल रो नेम। लिविंग कोरल रे तुमरो रेड कोरल आसी ताको तार एग्जांपल होछ कोन कोरालियम रुबरम एटा होची रेड कोरल। ऑर्गन पाइप कोरल कोन ट्यूबोपोरा कह जाय ऑर्गन पाइप कोरल। ब्लू कोरल होची हेलियोपोरा होछ कोन ब्लू कोरल। ब्रेन कोरल होची डिप्लोरिया होची ब्रेन कोरल। देन स्टैगहॉर्न होची आक्रोपोरा उना होची डिफरेंट स्पेशल नेम ऑफ द कोरल। एमते आसीबो तुमरो अदर फैबोसाइट आसीबो हनीकॉम कोरल नै हेलिसाइट आसीबो चेन कोरल आ लिथोस्टोनियम आसीबो रुगोस कोरल कोरल विथ वेल डेवलप्ड सेप्टा एंड डिसेप्टमेंट्स। तर एज अछि तो एति कादर इंपोर्टेंट जिंस रहबो कोरल। कोरल मेन क्वेश्चन होची कि तुम्हारा को कंडीशन में मिले जो कि 18 to 20 डिग्री टेंपरेचर अप टू 200 मीटर डेप्थ मिड लैटिट्यूड रे मिलियो लाइक एटा कॉमन क्वेश्चन। ता साथ एगरा सब डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल रो नेम मन रख। नेक्स्ट कम्स टू गोंडवाना फ्लोरा। सो गोंडवाना फ्लोरा फाउंड ड्यूरिंग गोंडवाना पीरियड तो कि तीनटा वैली रे डिपोजिशन हितला गोटे नर्मदा सन दामोदर महानदी गोदावरी।
से टाइम रे तुमरो गोंडवाना को दुटा डिवीजन कराई गोटे लोअर गोंडवाना गोटे अपर गोंडवाना सो लोअर गोंडवाना अपर गोंडवाना रो जो तुमरो फ्लोरा मिलंती दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट सेतवे गोंडवाना रे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द flora that present in the lower and upper part. So lower Gondwana characterized by certain flora. So तुमको खाली मन रखना पड़ेगा what are the different fossil forms or genus that found in lower Gondwana and what is found in upper Gondwana. So with तांगरा fossil type कोटा leaf कोटा stem कोटा तुम्हारा fruit एग्रा सब. तो main important lower Gondwana रहोची Glossopteris. That is lower Gondwana characterized by Glossopteris. Glossopteris होती leaf, Glossopteris, Gangopteris, Vertebrate, Gondwanadium एगुला सब आछो कोतरे लोअर गोंडवाना नोइजरा थियोप्सिस लैटक्सिलॉन सब तुम मन रखियो लोअर गोंडवाना है तो मेन इंपोर्टेंट जिंस गुरा होछ तो गुरा कोडा तुमरो गोंडवानाडियम हला वर्टिब्रेट हला ग्लोसोप्टेरिस हला हला कि नोइजरा थियोप्सिस हला एंड अपर गोंडवाना रे तुमरो आछो कोन टिलोफाइलम टिलोफाइलम होछ कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल ऑफ अपर गोंडवाना टिलोफाइलम टेडोफाइलम ओटोजोमाइट्स डिक्टोजोमाइट्स हला विलियमसोनिया इंपोर्टेंट तमरो डाइक्रोडियम एगुला सब एतिकी इंपोर्टेंट अछि हला तो सब जंग तुम तो जदि पारियो मन रखियो न हले एतिकी जिंस भी ले चली है जदि अपर गोंडवाना लोअर गोंडवाना so taphonomy is a term that used to describe the from the death of the organism to formation of fossil to its exposure तो हम कौन कहते टैफोनोमी कहते सो जो गोटे ऑर्गेनिज्म जो डेथ हुए तार सर्टेन कंडीशन थाए कि फॉसिल प्रोड्यूस हवा पे फर्स्ट होची कि क्विक बरियल हबो जोटे कि डिटैच फ्रॉम द एनवायरनमेंट जोटे कि डिके करबो नाही तो जो जगह रे तुमर रैपिड सेडिमेंटेशन तो से जगह तुमर बरियल हे परिबो जोटे कि मराइन कंडीशन बहुत सुटेबल सेतमे टेरेस्ट्रियल कंडीशन इज नॉट सुटेबल फॉर फॉसिल फॉर्मेशन ता सहित तुमर अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट भी सेटा टेरेस्ट्रियल हे परिबनी मराइन कंडीशन रे हे परिबो तो एबला हले गोटे ऑर्गेनिज्म रो डेथ हबो तापर से फॉसिल प्रोड्यूस करबो तो गोटे फॉसिल हवा पय मिनिमम सेटा 10000 ईयर ओल्ड हवा दरकार तो तो फॉसिल प्रोड्यूस हुए गोटे ऑर्गेनिज्म रो होल बॉडी प्रिजर्व हे पारे विथ सब पार्ट नहले कोनसी हार्ड पार्ट प्रिजर्व हे पारे अल्टर्ड हे कि अनअल्टर्ड हे कि और तुमरा कोनसी ऑर्गेनिज्म रो इंप्रेशन भी कंसीडर करा जाय जे फॉसिल सो तीनटा टाइप तुम फॉसिल पाइबो प्रोसेस रे गोटे सब पार्ट प्रिजर्वेशन गोटे होची हार्ड पार्ट प्रिजर्वेशन गोटे होची इनडायरेक्ट फॉसिल तो ऑर्गेनिज्म में होल सब पार्ट प्रिजर्व होची ताले ऑब्वियसली इट इज प्रिजर्व इन ए वेरी ग्लासियल एनवायरनमेंट जोटा कहबे बा कोल्ड एनवायरनमेंट रे सेठी सब पार्ट प्रिजर्वेशन पूरा जोटा कि मामथ तुमे पाउछो नहले तुम्हारा प्रिजर्व होची कोठी अंबर रे प्रिजर्व होची नहले आसफाल्ट रे प्रिजर्व होची जो जगह रे कंप्लीटली होल बॉडी बा होल कंप्लीट बॉडी विथ सब पार्ट में पाइ हार्ड पार्ट रे तुम्हारा दीटा कंडीशन आसीबो कोठी होची अल्टर्ड और होची अनअल्टर्ड अनअल्टर्ड माने तो स्केलेटल फ्रैगमेंट विल कंप्लीटली प्रिजर्व जोते कि नॉर्मल प्रोसेस होची रैपिड बरियल हे कि तुम्हारा प्रिजर्व हे परियो अल्टर्ड बेतले होची कि कोनोसी फॉसिल मतलब प्रिजर्व होची से जाय रे तुमरो फॉसिल सब पोर स्पेसेस क्रिएट हुए तो पोर स्पेसेस रे तुमरो फिल अप हबो आसी कि सेडिमेंट्स सेडिमेंट फिल अप हेले दीटा जिंस हबो गोटे रिप्लेसमेंट हे परिबो और परमिनलाइजेशन हे परिबो तबरे रिप्लेसमेंट हे परिबो तनो ओपन स्पेस अछि माने तदरे वाटर आडले से जहां मिनरल थिबो ता सहित रिप्लेस करबे तो रिप्लेसमेंट रे तुमरो बा परमिनलाइजेशन रे तुमरो प्रेसिपिटेशन हबो तो ये प्रोसेस रे कोन बे टोटल जो हार्ड पार्ट ता थाए स्केलेटल मैटर ता थाए एटा कन्वर्ट हे जाय गोटे स्टोन को गोटे रॉक को कीपिंग द शेप कांस्टेंट शेप ता कोन प्रिजर्व हेबो खाली ओनली कंपोजिशन विल चेंज सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेट्रीफ्रैक्शन जोथरे कि गोटे स्केलेटल मैटर कन्वर्ट हे जाय गोटे रॉकी मैटर त कोन पेट्रीफ्रैक्शन तो एबला प्रिजर्व हो किंतु रिप्लेसमेंट जेतु होची सबले मन तो रिप्लेसमेंट रे कोन स्ट्रक्चर ता सबले प्रिजर्व होय आफ्टर रिप्लेसमेंट तो एटा सब पार्ट और हार्ड पार्ट रो प्रिजर्वेशन हो यदि इनडायरेक्ट फॉसिल होची ताले मे प्रोड्यूस एन इंप्रेशन
इंप्रेशन माने कोन हुए कोनोसी थर पत्र पड़े को जगह लीफ रो वेन गुरा रो इंप्रेशन रह जाए तो इंप्रेशन फॉसिल कहउछ अदरवाइज तुमरो कास्ट एंड मोल्ड हे पारिबो लाइक कोनोसी जदी फॉसिल अछि जदि कोनोसी सॉफ्टवेयर सेडिमेंट से डिपोजिट हेछि बा सॉफ्टवेयर सेडिमेंट रे बरियाल हेछि तो सेडिमेंट कोन करिवो it will produce an external can produce an external impression and after that the fossil will gradually erode away or तुमको dissolution है कि बाहर जीवो बा distilled है कि बाहर जीवो बाहरला पर it will produce an impression और hollow impression ओटे produce करे otherwise मोर कोन कोनसी जदी hollow fossil अछि ता भीतर sediment पस जाय it will produce an internal expression जो तक internal mold internal cast को internal mold को external mold को इनडायरेक्ट अदरवाइज तुम ट्रेस फॉसिल आसो जो कि ऑर्गेनिज्म रो कोनोसी लोकोमोशन हो तार हैबिट हो ताकू ने ड्वेलिंग हो लोकोमोशन हो जो हम ट्रेस फॉसिल कहते दैट कम अंडर इक्नोफॉसिल तो कहते इक्नोफॉसिल जदी कोनोसी ट्रेस रहला ताकू इक्नोफॉसिल कहा जाए बा ट्रेस फॉसिल भी कहा जाए द स्टडी ऑफ ट्रेस फॉसिल इज कॉल्ड इक्नोलॉजी सो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्नोफॉसिल आसो जोटा कि इनडायरेक्ट एविडेंस देंती जोटा ट्रैक ऑफ insects, trail of worms, footprints of higher vertebrates, burrows and worms of arthropods जोटा कि होल करी जोड़ा रहती तापरे बोरिंग टनल शाफ्ट मेड बाय सम इनवर्टिब्रेट्स तापरे तुमको किछरा रेस्टिंग इंप्रेशन आसे ऑर्गेनिज्म रेस्ट कला बेले ताको क्यूबिचिना कहंती कोप्रोलाइट्स होची एक्सक्रीट ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स और फेकल पेलेट्स होची एक्सक्रीट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स देन रेस्टिंग इंप्रेशन पड़े आसीबो तुमरा क्यूबिचिना डबल लिखा जाय ठीक है सरफेस पीरियड होची पैसिचिना आसीबो क्रॉलिंग इंप्रेशन होची रेपिचिनिया आसीबो फीडिंग ट्रेस होची फुडिचिनिया आसीबो ड्वेलिंग होची डोमिचिनिया आउ एस्केप स्ट्रक्चर फुगिचिनिया ड्यूरिंग एस्केप ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो एरा सब तुम्हारा ट्रेस फॉसिल रहला कोप्रोलाइट्स रहला एटा बरोज रहला ट्रेल्स रहला फुटप्रिंट्स ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स नेक्स्ट हो तुम्हारा टाइप्स ऑफ फॉसिल इंपोर्टेंट होची डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल जो बॉडी फॉसिल जोटा कि कंप्लीटली तुम्हारा ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हेतो सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर हार्ड पार्ट्स एंड सॉफ्ट पार्ट्स कंप्लीट जोटा होची तुम्हारा जोटा ग्लेशियल कंडीशन कहले कि एस्फाल्ट कंडीशन हो रेजिन कंडीशन हो ए सब पड़िबो तापर तुम्हारा आसीबो केमिकल फॉसिल प्रिजर्वेशन ऑफ बायोकेमिकल ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that preserve organic molecules जोड़ा कि एग्जांपल हो तुम्हारा पालियोप्रोटीन्स हो अमीनो एसिड हो तो एगुरा तो आसीबो आ कार्बोनेसियस फिल्म फॉर्म बाय कार्बोनाइजेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस तार मिनरल रिसाइड्स इन रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एगुरा सब जागा तुम्हारा कोन इंक्लूड करे केमिकल फॉसिल ले तुम्हारा ऑर्गेनिक रेसिड्यू इन सेल्स केरोसिन अनसेड बायोमोलिक्यूल्स एरा सब जागा केमिकल फॉसिल कंडीशन तो ट्रेस फॉसिल जानले हमें फुटप्रिंट्स एगुरा सब आसीबो जोगुरा इनडायरेक्ट एविडेंस देंती अबाउट द ऑर्गेनिज्म स्कोलिथोस क्रूजियाना डायनासोर फुटप्रिंट जोटा आसीबो तो डिराइव फॉसिल होची रिवर्ट फॉसिल जोटा गोटे जो जगह प्रोड्यूस हेतिबो सेटो इरोड हेकी आ गोटे जगह आसी डिपोजिट हेतिबो ताको कहंती डिराइव फॉसिल सेति में सेमरा कोन इरोड हेते वन हेते राउंडेड हे जातांती रिवर्किंग मोर ब्रेक हे जो फॉसिल गुरा तबरे लिविंग फॉसिल द रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म दैट आर रिमेन अनस्टेन्ड ओवर जियोलॉजिकल टाइम जोटा कि बहुत समय बाद कोन कोनसी चेंजेस हे नथिबो एग्जांपल तुम्हारे लिमुलस हॉर्सू क्रैब ता कहंती तापर लिंगुला लाटिबेरिया ता होची तुम्हारा आसीबो ब्राचियोपोड रे तापर जिंको बिब्लोड को आसीबो हला तो एरा सब लिविंग फॉसिल कहै तापर रिमेन फॉसिल होची दीज आर मोर फॉसिल दैट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इरोडेड सम पार्ट ऑफ द फॉसिल विल रिमेन ब्रेक हे तो भांगी तो अल्प पार्ट तार थबो ता कोन रिमेन फॉसिल so indicate higher energy environment तापर फॉसिल फेसिस फॉसिल कि तुमरा एरा को हाथ मारलो याडे छडे बुझी पर फेसिस फॉसिल होची तुमरा एसोसिएशन ऑफ फॉसिल गोटे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रे इंटरलिंक्ड हेती फॉसिल गुरा तो these are environment restricted fossil occur in particularly specific sediment environments गोटे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जते बोलतो ता कोन कोन फेसिस फॉसिल जोटा कि इंडिकेट करे गोटे डिपोजिशनल एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट गोटे कोरल रीफ होची सालोमेराइन ब्राचियोपोड होची मेराइन सेल फेसिस तापर जो स्यूडो फॉसिल
They are non-organic structure that mistaken as fossil. एग्जांपल होछि डेंटिटिक मैंगनीज ऑक्साइड जोटा आपे लाइक प्लांट लाइक देखा हुए गोटे फॉसिल वाला देखा कि रिंग वाला जो प्रोड्यूस हुए जो कंसंट्रेशन रिंग जो पड़ा प्रोड्यूस हुए इन कैल्साइट प्रेसिपिटेशन तो सेरा भी तुम्हारा देखा जाए फॉसिल वाला. So these are different types of fossil. Body fossil, chemical fossil, trace, derived, living, remain, facies, pseudo fossil. derived और remaining में क्या अंतर है? जो रिमेन फॉसिल है उसको डिराइव बोल सकते हो, नहीं तो रिमेन फॉसिल ऐसे ही टेक्टोनिकली ब्रेक हो सकता है एक ही जगह में इन सीटू में. ठीक है. फॉसिल नहीं अंदर से वर्क फ्रॉम ऑर्डर. Then what are the significance of fossil? Age determination by environment study by paleogeography reconstruction by different petroleum extraction by तुम्हें foraminifera fossil use करो तो ये सब different extraction पे use हुए है ना. ये तो हमारे पास group of microfossil and there you can say हमारे पास group of microfossil तो skeletal composition है ना. तो Acritas, Dinoflagellata, Coccolithophore, diatoms. So organic आसीबो. Coccolithophore होची calcite, diatoms होची siliceous. सेमती Radiolaria आसी siliceous, Foraminifera organic आसीबो, Agnatha आसीबो, calcareous आसीबो. Ostracod calcareous आसीबो. Conodonts होची tooth like elements, phosphatic आसीबो. Important मोड. तब स्पोर पोलेंस आसीबो ऑर्गेनिक टेरेस्ट्रियल कंडीशन आसीबो. हला द माइक्रोफोसिल ग्रुप्स. Yes, so this much your paleontology.